Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. जय राधे जय कृष्णा Nittai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Hare Krishna. Jai. Nittai Gora. Jagannath Baldev Subhadra. This is the Dvaita Acharya's appearance day. It's a very, very important day for Vaishnavas. आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है अद्वैत आचार्य का प्राकट्य दिवस वैष्णव के लिए। So the first half of the class from 8 to 8:30 will be on the Bhagavatam sloka, and the second half will be on the glories of Advaita Acharya. तो पहले जो 8:30 बजे तक हम भागवतम पे चर्चा करेंगे और फिर 9 बजे तक अद्वैत आचार्य के प्राकट्य दिवस पर। Om Janatamirandasya Jana Jana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Namo Mahavandanyaya Krishna Premavadayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Chase Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Jina Bandhu Jagatpate Gopi Shwa Gopi Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Risha Bano Suti Devi Pranamami Hari Priye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I'm going a little speedily today because at this temple you have to stop exactly at 9 o'clock. हमको जो है 9 बजे तक क्लास खत्म करनी है इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। Some temples I can speak till 10:30, 11 o'clock. They're happy because they have many, many brahmacharis. But here, so yeah, तो जो है must be मतलब 9 exactly. तो 9 बजे तक हमको क्लास खत्म करनी है। कोई ब्रह्मचारियों की क्लास होती तो लेट भी चलती, लेकिन अभी आप ग्रस्त लोग सब हैं तो 9 बजे तक खत्म करेंगे। But I have to wait till he finishes writing the text. All right. So today is like a Kadashi. आज एकादशी नहीं है। Vishnu Tattva deities is like a Kadashi. We fast on a Kadashi like that. तो So विष्णु तत्व का जो प्राकट्य दिवस होता है तो हम उस पे एकादशी की तरह फास्ट करते हैं। Nishingadev, Ram Navami, Nitai, Nityananda Triadashi, all these festival days we do Akadashi. Varaha Devadashi, Vaman Devadashi. It's about 10 we do. Mm-hmm. So understand that today. Huh? तो जैसे रामनवमी है, अद्वैत आचार्य का प्राकट्य दिवस है, Shringatradasi. नित्यानंद त्रयोदशी है, वराह द्वादशी, वामन द्वादशी, तो इन दिनों हम एकादशी की तरह व्रत करते हैं। This pleases the Lord very much. Very much. इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। It's easy to do. बहुत आसान है करना। And everyone knows food tastes more delicious on Akadashi. और It's true. Nobody can explain why, but it tastes more delicious on Akadashi. या सब जने जानते हैं एकादशी को जो है और भी स्वादिष्ट लगता है हमें। क्यों लगता है पता नहीं। So in this way, he's almost finished. In this way, we offer our devotion to the Lord every possible way we can. तो हम हमारे हर प्रकार से जो है जिस तरह संभव हो सके हम भक्ति करते हैं इस दिन। That's the essence of bhakti. वो भक्ति का सार है। Never miss an opportunity to get the mercy. कभी भी अवसर को मत खो, कृपा प्राप्त करने के अवसर को कभी मत खो। But we don't do it for the mercy. We do it for the devotion. लेकिन हम कृपा के लिए नहीं करते, हम भक्ति के लिए करते हैं। But then Krishna says, "Oh, my bhaktas have come. Let me shower them with my mercy." लेकिन कृष्ण सोचते हैं कि ओ मेरा भक्त जो है भक्ति कर रहा है तो मुझे कृपा बरसाने दो।
Okay, the sloka is finished. What sloka number is it? Number what? 38. 38. Yeah, You sure? 38. 38. Okay. Okay, we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, Slok 38. Yo nita pravisvabhutani bhuter atat yakaki ashramya. Wait a minute. Sorry. यो अंत प्रविश्य भूतानि भूते अति अखिलाश्रय है. There's only two. That's all? वन श्लोका 38. No. On the back, on the other page, there's more. For me. Okay. Sorry. Sri Sa Vishnu Adyako Dayan Yato Sto Kala Kalayantam Prabhu. Let me start it from the beginning. Yo nita pravisha bhutani bhuter ati ayakirat rasyaha. यह अंत प्रविश्य भूतानि भूते अति अखिलाश्रय है. Sa Vishnavatyako diyadyoso kala kalayatam prabhu. सह विष्णु आख्य है अधियज्ञ है असौ काल है कलयताम प्रभु. Yo nata pravisya bhutani bhuter atyakyaris rasya. यह अंत प्रविश्य भूतानि भूते अति अखिलाश्रय है. Savishnakyo Divyatyatso Kala Kalyatam Prabhu. सह विष्णु आख्य है अधियज्ञ है असौ काल है कलयताम प्रभु. Yo Nita Pravisha Bhutani Bhuter Atyakadasraya. यांत भविष्य भूतानि भूते अत्यखिलाश्रय है. Savishakyo Dayadnoso Kala Kalayatam Prabhu. सह विष्णुवाक्य है अधियज्ञ है असौ काल है कलयताम प्रभु. यह अंत है प्रविश्य भूतानि भूते अति अखिलाश्रय है. सह विष्णुवाक्य है अधियज्ञ है असौ काल है कलयताम प्रभु. यह अंत है प्रविश्य भूतानि भूते अति अखिलाश्रय है. सह विष्णुवाक्य अधियज्ञ है असौ काल है कलयताम प्रभु. यह अंत प्रविश्य भूतानि भूते अति अखिलाश्रय है. सह विष्णुवाक्य अधियज्ञ काल है कलयताम प्रभु. Word for word. सब शब्दार्थ इस प्रकार से है. यह जो अंत है भीतर प्रविश्य घुसकर भूतानी जीवों को भूते जीवों के द्वारा अति संहार करता है. अखिल हर एक का आश्रय है आधार. सह वह विष्णु विष्णु आख्य है नामक अधियज्ञ है समस्त यज्ञों का भोक्ता. असौ वह काल है काल कलियताम समस्त स्वामियों का प्रभु स्वामी. अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है. बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद शिला प्रभुपाद की. Right. समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं तथा समस्त स्वामियों के स्वामी हैं. वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं. वे सबके आश्रय हैं.
और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। वे परम भोक्ता हैं और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि 5.14 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण विष्णु एकमात्र ईश्वर हैं और सब भृत्य अन्य सब उनके दास हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता हैं। यही विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं और दूसरे जीव के द्वारा जीव का संहार करते हैं। Complete? Okay. So here in this verse is a concise description of the Supreme Personality of God. तो इस श्लोक के अंदर जो परम भगवान का है संक्षिप्त में वर्णन है। When the sloka says Lord Vishnu, it means Vishnu Tattva. जब इस श्लोक में जो हम विष्णु लिख रखा है उसका मतलब है विष्णु तत्व, That means all the incarnations of the Supreme Lord Krishna. मतलब भगवान के सारे अवतार। These incarnations are specifically named in Srimad Bhagavatam. तो इन अवतारों का श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। So there can be no interpolation or any falsehoods. तो इसके अंदर कोई जो है दिमाग से सोचने की कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ये एज इट इज है। We see that there's some famous temples in India where they say the guru is an incarnation. हम देखते हैं कि भारत के अंदर बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ पे गुरु को भगवान का अवतार मानते हैं, But his name is not in Shastra. लेकिन उनका नाम शास्त्रों में नहीं है। If it's not in Shastra, we do not accept. यदि ये शास्त्र में नहीं है तो स्वीकार्य नहीं है। If they want to be controlled by Maya, they can be controlled by Maya. यदि वो माया द्वारा नियंत्रित होना चाहते हैं उनको होने दो, But we always follow Shastra. लेकिन हम जो है शास्त्र को फॉलो करते Anything हैं। that we say, we can back up by Shastra. कुछ भी कहा जाता है तो हम शास्त्र से कंफर्म करते हैं। So here it says Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the enjoyer of all sacrifices. तो यहाँ पे कहा गया है जो परम भगवान विष्णु है वो जो है सभी सैक्रिफाइस, सभी जो यज्ञों के भोक्ता हैं। What does that mean? उसका मतलब क्या है? That means every activity that is devoted to him, he's accepting and enjoying. मतलब भगवान कृष्ण भगवान के प्रति जो भी गतिविधियां की जाती हैं तो वो उसको स्वीकार करते हैं और उसको भोगते हैं। We're just the instrument. हम सिर्फ एक उपकरण जैसे हैं। He's controlling everything. वो सभी चीजों पे नियंत्रण रख रहे हैं। How is he controlling? वो कैसे नियंत्रण रखते हैं? He's controlling through the three modes of material nature. वो तीन गुणों के माध्यम से नियंत्रण करते हैं, Sattva-gun, Rajagun, and Tamagun. सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। We never want to be in Tamagun. हम कभी भी तमोगुण में नहीं होना चाहते। Sometimes we must be in Rajagun to get things done. कभी कभी हमको रजोगुण में होना पड़ता है चीजें करने के लिए, But we want to be mostly in Sattva-gun. लेकिन हमें जो है मोस्टली अधिकतर सतोगुण में होना चाहिए, Because Bhakti Yoga devotion is in Sattva-gun. क्योंकि भक्ति जो है वो सतोगुण में होती है। Two people can do the same activities. One's in Tamagun and one's in Sattva-gun. But Krishna will only take the one from Sattva-gun. एक व्यक्ति तमोगुण में कार्य कर सकता है, दूसरा सतोगुण में भक्ति कर सकता है, लेकिन कृष्ण जो है सतोगुण की भक्ति को स्वीकार करते हैं। So that's what he means when he's the Lord of all sacrifices, all yagya. Life itself is a yagya. तो इसका मतलब यह है कि जो जीवन है वो भी खुद ही यज्ञ है, यज्ञ की तरह है। When you devote yourself to Krishna, that's a yagya. जब आप अपने आप को कृष्ण को समर्पित करते हो तो वो खुद ही अपने आप में एक यज्ञ है। But those who act for their own pleasure and desires, that's not a yagya. लेकिन जो अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं वो यज्ञ नहीं है। Krishna wants nothing to do with that. कृष्ण का उससे कोई लेना देना नहीं है। He does not condemn them. कृष्ण उनकी उस चीज की निंदा नहीं करते हैं। He just says they're not my devotees. Bas. He just say, वो सिर्फ ऐसे बोलते हैं कि ये मेरे भक्त नहीं है। He doesn't punish them. He said, why should I punish them? They're not my devotees. कृष्ण उनको दंड नहीं देते। कृष्ण बोलते हैं कि मैं उनको दंड क्यों दूं, वो मेरे भक्त नहीं है। The example I gave in the class that I gave before with Draupadi. Draupadi was being disrobed. And she was thinking, what's going to happen to me? And then Krishna was playing chess in Dwarka. And Rukmini said, look what's happened to Draupadi. Save her, save her. Krishna said, she didn't call my name. She didn't call for me. तो पिछली क्लास में प्रभु महाराज ने जो है उदाहरण बताया था कि जैसे द्रौपदी है,
वो उसको उसका वस्त्र हनन हो रहा था, तो भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ चेस खेल रहे थे। तो रुक्मणी ने कहा कि देखो देखो द्रौपदी का वस्त्र हनन हो रहा है। कृष्ण बोलते हैं कि उसने वो मेरा नाम नहीं बोल रही है। So when we chant Krishna's name, we're calling to Krishna. Huh? Prabhupada used to say, just like a baby calling for his mother, ma, ma, milk, milk, ma, ma, like that. तो जैसे बच्चा जो है अपनी माँ को पुकारता है, माँ माँ, दूध दूध, वैसे हमें कृष्ण को पुकारना चाहिए। But we don't call Krishna to take anything from him. We call Krishna to give him everything. लेकिन हम कृष्ण को इसलिए नहीं पुकारते उनसे कुछ लेने के लिए, हम कृष्ण को पुकारते हैं कुछ देने के लिए। We do everything for his satisfaction. हम जो भी कुछ करते हैं उनकी संतुष्टि के लिए करते हैं। Sometimes it might be mixed. कभी कभी जो है ये थोड़ा मिश्रित हो सकता है। No problem, because young devotees, Kanista Adhikaris, they don't really know the tattva perfectly yet. ये इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो तत्वों को पूरी अच्छे से नहीं जानते हैं। We all started as Kanistas. We all started in Dasyaras. Everybody. तो हम सभी ने जो है कनिष्ठ के स्तर से ही शुरुआत की थी। The process naturally takes you upwards to Krishna. तो ये जो प्रोसेस है ये हमको धीरे धीरे जो है स्वभावतः है हमको ऊपर लेके जाती है। So we know the difference between Karma Kanda and Bhakti Yoga. तो हम कर्मकांड और भक्ति योग में अंतर समझते हैं। We know that our purpose in life is to serve Krishna, that we are his parts and parcels. हम जो है भगवान कृष्ण के अंश हैं, तो हमारा जो है वो भगवान कृष्ण को सेवा करना हमारा To जीवन का know उद्देश्य that we are his bhaktas. है। ये जानना कि हम कृष्ण के भक्त हैं। But understand, nobody can go to Krishna direct. No one can go to Krishna direct. लेकिन ये बात जान लो कि कृष्ण के पास में सीधे सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। So we go through Nitya Garanga. सो हमको निताई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु So के माध्यम से easy, जाना पड़ता है। so nice, so wonderful. कितना अच्छा है, कितना आश्चर्यजनक है, कितना अच्छा They है। came here just for us. वो सिर्फ हमारे लिए यहाँ पर आए, गौर But निताई। who is Nitya Garanga? Nitya Garanga is Balaram and Krishna. लेकिन ये निताई गौर कौन है? ये बलराम और कृष्ण है। In Dwapar Yuga, they killed all the demons. In Kali Yuga, they redeem all of them. द्वापर युग में उन्होंने सारे जो है दानवों का जो है उनका संहार किया, लेकिन कलयुग में जो है उन सबका उद्धार किया। So that's the first part of this verse. The next is that Krishna is the time factor, Kala Chakra. तो इसका जो आधा भाग जो है महाराज ने जैसे बताया वो है, और इसका बाकी आधा भाग है वो ये बताया है कि कृष्ण भगवान जो है वो काल तत्व है। Our life is encapsulated between in time, birth at one end and death at the other. तो हमारी जो जीवन जो है वो दो चीजों के बीच में है, जन्म और मृत्यु के बीच में। But what do we do with this life? We must use it for Krishna. लेकिन हमको इस जीवन से क्या करना है? हमको इसको भगवान कृष्ण के लिए उपयोग करना है। We know we can't go to Krishna direct, so how do we go through Krishna? हम जानते हैं हम कृष्ण के पास सीधे सीधे नहीं जा सकते, तो हम कृष्ण के पास कैसे जाएं? We go through Krishna through the parampara. हम कृष्ण के पास जो है परंपरा के माध्यम से जा That's our सकते हैं। direct connection and current to Krishna. वही हमारा कृष्ण से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं। Prabhupada was the last of the line to set up all these institutions. तो प्रभुपाद जी जो है इस परंपरा के अंदर लास्ट हैं। His guru Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada set up the whole in India, all the Gaudiya maths. जो इनके प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पूरे भारत के अंदर गौड़ीय मत की स्थापना की। His guru, Prabhupada's guru Bhaktisiddhanta Saraswati had 60,000 disciples. जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे उनके 16,000 या 60,000 भक्त थे। He had 64 temples, one for each limb of bhakti. उनके 64 मंदिर थे। 64 भक्ति के जो अंग होते हैं उसके ऐसे 64 मंदिर थे उनके, 64 भक्ति के अंगों के जैसे। He was considered a human encyclopedia. He had so much knowledge. उनको इतना ज्ञान था कि उनको जो है व्यक्ति एनसाइक्लोपीडिया करके जानते थे, बृहद नॉलेज बहुत। And his father was Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod, हिज फॉलोअर। no, Bhakti Siddhanta's father was Bhakti Vinod हाँ, भक्ति Thakur. सिद्धांत जी जो है उनके जो पिताजी हैं भक्ति विनोद ठाकुर। But his father did not give him initiation लेकिन उनके पिताजी ने उनको दीक्षा नहीं दी, because that's the symptom of the caste Brahmins. क्योंकि ये जो जातिगत ब्राह्मण होते हैं उनमें होता है ऐसा। Brahmin Vaishnavism is based on qualification. जो वैष्णविज्म जो है वो गुणों के आधार पे डिसाइड होता है। Who here was born in Brahmin family? Raise your hand. आप ऐसे हाथ खड़ा कीजिए जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। 1, 2,
3, 4. Yeah, but we're all Vaishnavas. आप जैसे 4 हो, लेकिन आप सब जो है वैष्णव हो अभी। Vaishnava is higher than Brahmin. वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से ऊपर होते हैं। Vaishnava is only based on qualification. Whether वैष्ण you're born high or low, king or beggar, does not matter. Everyone's welcome for Vaishnava line. तो वैष्णव जो है वो गुणों के आधार पे डिसाइड होता है, जो राजा हो, रंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो वैष्णव जो है गुणों के आधार पे डिसाइड होता है। All Mahaprabhu's associates and Mahaprabhu himself were born in Brahmin families. चैतन्य महाप्रभु के सारे जो पार्षद थे और चैतन्य महाप्रभु खुद भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, But he accepted anyone from any caste if they had Vaishnava qualities. लेकिन उन्होंने हर जाति के लोगों को स्वीकार किया यदि उनमें वैष्णव के गुण थे। Qualification is superior to caste birth जो गुण है वो जन्म से ऊपर है, because we see so many Brahmins in Shastra, they fell down. क्योंकि हम शास्त्रों में देखते हैं कितने सारे ब्राह्मण हैं, उनका पतन हो जाता है। But Vaishnavas with qualification will not fall down. लेकिन वैष्णव जिसमें गुण है वो कभी भी पतन नहीं होएगा। They're trained properly. उनका बहुत अच्छे से उनका प्रशिक्षण That's होता why है। don't be in a rush to be a devotee. Take your time, learn the fundamentals, learn Vaishnava etiquette, learn how to serve the Vaishnavas. तो जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छे से सीखिए वैष्णविज्म क्या है, उसका प्रशिक्षण लीजिए और ऐसे। So this time factor controls everything. तो ये जो समय जो है ये नियंत्रण करता है Life and death. जन्म और मृत्यु का, Also, it controls the movement also. और ये हमारे जो चाल ढाल है उसको भी नियंत्रण करता है। Those who are astrologers know those who follow astrology know that there's favorable times and there's non-favorable times. जो ज्योतिष को जानते हैं वो उनको पता होता है कि कोई जो हमारे हमारे पक्ष का समय, हमारे विपक्ष का समय। Even in the Panchaka, it says when is auspicious to travel, when is it not good to travel. पंचांग के अंदर लिखा होता है कि जब आपका यात्रा करना कब शुभ है, कब अशुभ है। So there's no escape from time. तो कोई भी जो है समय से नहीं बच सकता, But you can be friends with time लेकिन आप समय के साथ दोस्ती कर सकते because हो, it is a opulence of Krishna. क्योंकि यह भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है। Sometimes when we chant, we find that we chanted our 16 rounds or 32 rounds so quickly, and we say, "Whoa, I finished already," and you cannot believe it because the time shrinks and the time expands. इस समय जो है ये सिकुड़ जाता है और वृद्ध हो जाता है। जैसे कई बार हम 16 माला 32 मालाएं जल्दी से कर लेते हैं, तो ये कैसे होता है? तो समय जो है सिकुड़ जाता है, वृद्ध हो जाता है। Devotees notice this when they chant. भक्त जानते हैं जब वो जब करते हैं, Otherwise, you cannot see it. But when you chant, you can see, oh, how did I finish my rounds? Or the other way, oh, wow, I haven't chanted so many. It works both ways. हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो जपा किया लेकिन समय बहुत हो गया, लेकिन बहुत कम जपा किया, तो समय जो है वो सिकुड़ता है, कई सिकुड़ता भी है और बड़ा हो जाता है। ये भक्त लोग समझ सकते हैं। So the next part of this verse is that he's the master of all masters. और इसका इस जो श्लोक का दूसरा भाग है कि वो सभी स्वामियों के स्वामी हैं। Krishnastu Bhagavan Swayam. कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। All the incarnations manifest from him. सारे जो अवतार जो हैं उनसे आते हैं। Krishna first appears and he manifests first as Balaramji. सबसे पहले कृष्ण से जो है बलराम जी आते हैं। Then he sits back and relaxes. Krishna sits back and relaxes. No, Krishna expands first as Balaramji and then Krishna relaxes. हाँ, कृष्ण जो है बलराम जी उनके प्रथम विस्तार है, उसके बाद कृष्ण आराम करते हैं। Then Balaram manifests to Chaturvahuya. तो बलराम जी से उसके बाद में चतुर्व्यूह आते हैं। Chaturvahuya is Vasudev, Shankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। Then that Shankarshan who represents Balaram makes another Chaturvahuya. तो जो संकर्षण बलराम जी से हैं उनसे दूसरे चतुर्व्यूह आते हैं। And that Chaturvahuya manifests as Ram, Lakshman, भरत, शत्रुघ्न, the other two brothers. Yeah. Bharata and शत्रुघ्न। Satyuga. Yeah. तो जो दूसरे संकर्षण जो बलराम जी से आए हैं उनका विस्तार होता है और वो होते हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। So that's Goloka, Krishna's in. Then Ram is in Ayodhya, which is below. And then underneath Ayodhya is Vaikuntha. तो सबसे ऊपर गोलोक है, फिर उससे जो भगवान राम का धाम है और फिर उसके नीचे जो है वैकुंठ के अदर लोक हैं। And this is Shankarshan again. Shankarshan then manifests Mahavishnu, Karanadakshaya Vishnu. और जो ये संकर्षण जो है फिर इनसे महाविष्णु
जो आते हैं, कारणोदकशाही विष्णु आते हैं। all the universes are just coming out of his pores. सारे ब्रह्मांड जो हैं उनके रोमकूपों से निकल रहे हैं। Then Karanadakshay Vishnu manifests Garbhodakshay Vishnu. फिर गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं कारणोदकशाही विष्णु से। All the incarnations manifest from Garbhodakshay Vishnu. सारे जो अवतार जो हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं, Except for Krishna, Balaram, and Rama. सिर्फ कृष्ण, बलराम और राम के अलावा सारे अवतार जो है गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं। Nishingadev, Vamana, Varaha, Matsya, all the incarnations manifest from Garbhodakshay Vishnu. नरसिंह, वामन, मत्स्य अवतार, ये All. सब सारे बाकी जो अवतार है ये गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं। Then Garbhodakshay Vishnu manifests Kishoradakshay Vishnu, which is Paramatma, inside the heart of every living entity. तो गर्भोदकशाही विष्णु जो है विस्तार करते हैं शिरोदकशाही विष्णु के रूप में, जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। And that's the next part where it says Vishnu enters everyone's heart. और जो श्लोक का दूसरा भाग है उसमें लिखा है कि विष्णु जो है सभी के हृदय में प्रवेश करते हैं। He enters your heart as Paramatma. वो परमात्मा के रूप में आपके हृदय में प्रवेश करते हैं। But your Atma is also in the heart, sitting next to the Paramatma. लेकिन आपकी आत्मा भी हृदय के अंदर है, परमात्मा के अगले जस्ट बगल में बैठी हुई। Paramatma is just witnessing. परमात्मा जो है सिर्फ जो है साक्षी के रूप में देख रहे हैं। For every living entity, not just the humans, mosquitoes, dogs, cats, hogs, camels, everything. सिर्फ मनुष्य के हृदय में नहीं, मच्छर, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, सबके हृदय में। When the demigods come down to Jagannath Puri, they see everybody in Puri as four-armed Vishnu. जब देवता लोग जगन्नाथपुरी में आते हैं तो जगन्नाथपुरी के सभी लोगों को वो चार भुज विष्णु के रूप में देखते हैं। But they don't see just the people. The mosquitoes are four-armed Vishnu. The dogs are four-armed Vishnu. Everything there is four-armed Vishnu in Puri. लेकिन पुरी के अंदर सिर्फ मानवों को ही नहीं बल्कि मच्छर, कुत्ता, बिल्ली सबको वो चार भुज के रूप में देखते हैं देवता लोग। So this is Krishna. He's the master of all. तो ये कृष्णा है, सभी स्वामियों के स्वामी, सभी चीजों के स्वामी। Brahmaji and Mahadev, there is his expansions. ब्रह्मा जी और जो शिव जी हैं वो उनके विस्तार हैं। I know they like this, the Shastra says Brahma, Vishnu, Shiva, like they're equal, but they're not equal. कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी जो हैं वो एक स्तर पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। But Vishnu lets it look like they're equal because they're his servitors. हाँ, लेकिन भगवान विष्णु कई बार ऐसा करते हैं कि वो अपने आप को उनके समान दिखाते हैं क्योंकि जो वो उनके सेक्रेटरी हैं। So next it says he's the support of everything. He supports the whole material existence. इसके आगे बोला गया है कि वो सारे भौतिक जगत को जो है उसका सपोर्ट करते हैं भगवान विष्णु। He controls our remembrances and he controls our forgetfulness. वो हमारी जो ज्ञान और अपोहन, याददाश्त और भूलना जो है उस चीज को नियंत्रण करते हैं। He inspired all of you to come here to this class this morning. He inspired everyone to come to this class this morning. आप सभी को परमात्मा ने जो है इंस्पायर किया है कि आप आइए इस क्लास के अंदर। You think that, oh, I want to go to temple today. No. Bhagavans inspired you to go to temple. आप सोच रहे हो कि आप मंदिर आए, नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आपको प्रेरित किया, चलो मंदिर। That's why Krishna is called Vatsala. इसलिए कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है। Bhakta Vatsalya. भक्त वत्सल He's कहा जाता very affectionate to his devotees. है। वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। If you give Krishna just a little bit of affection, he'll give you a whole ocean of affection back. यदि आप कृष्ण को इतना सा प्रेम देते हैं तो वो आपको उस प्रेम का सागर दे देते हैं। So in this way, this is what this verse has described. Prabhupada also says from Chaitanya Chamrita that Ekala Isvara Krishna, the only supreme Lord is Vishnu, meaning Vishnu Tattva, meaning Krishna. तो इसमें चैतन्य चरितामृत का भी जो कोट किया गया है, एकले ईश्वर कृष्ण है और सब भ्रत है, तो सब कृष्ण जो है केवल कृष्ण भगवान है। Okay, so any questions about this verse before I go to Dvaita Charya? किसी का कोई प्रश्न है इस श्लोक से संबंधित? दो प्रश्न है। Yes, 2 questions. Excellent. 3. First. No, Chaitanya Mahaprabhu is Avatari. He's Krishna himself. Sure, this is in Shastra. Krishna Leela in Dwapara Yuga and Mahaprabhu Leela in Kali Yuga. Mahaprabhu's Leela in Kali Yuga is the conclusion of Krishna Leela in Dwapara Yuga. He's Avatari, no doubt about it. That's next.
Oh, yeah, yeah, sorry. अवतार नहीं है। Good. Hare Krishna. Okay, I understand you. I understand you. Translate so they तो understand. प्रभु जी का प्रश्न है कि कई बार जो है हम जप को बहुत आनंद आता है, कई बार हम जप से जो बहुत अच्छा नहीं लगता जप। तो प्रभु जी का प्रश्न है महाराज, क्या आप अपने जो है आपने जो रियलाइजेशन है उससे बता सकते हैं कि इसके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हैं? To enjoy chanting, you have to get taste. तो जो आपको जपा का यदि आनंद लेना है तो आपको उस जपा का स्वाद होना चाहिए। There's many ways you can get taste. कई तरीके हैं उस जपा के में आपको स्वाद आए उसके लिए। But for beginners, it's not so easy to get taste. लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी है उनके लिए इतना आसान नहीं है। So the best way for beginners to get taste is to chant all your 16 rounds at one time. तो जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके लिए जो जपा के अंदर टेस्ट आए उसके लिए तरीका है कि सारे 16 जो राउंड जो है वो एक जगह पे Jai आप करें। Nitagore, Sham, Jagannath Baldev Subhadra. उनके लिए तरीका है कि वो 16 राउंड जो है वो एक जगह बैठ के करें। This is very important. Consider you have 1 liter of milk and you have to boil the milk. जैसे उदाहरण के लिए आप सोचिए आपके पास में 1 लीटर दूध है, आपको उसको उबालना है And it takes 16 minutes to boil that milk. और उस दूध को जो है उबलने में 16 मिनट लगते हैं। So you put the milk on, but after 8 minutes you say, "Oh, I have to go to my internet." You turn it off and go to the internet. Then you come back. You have to start all over again. Huh? तो अभी जैसे दूध को आपको जो है 16 मिनट लगते हैं, आपने थोड़ा उबाला, फिर सोचे अरे मेरे को कुछ काम है, उस आपने बंद कर दिया गैस का नॉब, फिर दोबारा आए, फिर चलाया, तो फिर दोबारा आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। Sure, we must chant our 16, but it's not only the number, it's the energy that goes with the chanting that you don't want to cut. तो ये जो 16 माला जो है, तो ये जो है सिर्फ नंबर की बात नहीं है, कि संख्या की बात नहीं है कि 16 माला करनी है, लेकिन इसके साथ जो एनर्जी भी जुड़ी हुई है, वो जो आप एक एक जगह बैठ के करते हैं, तो वो एनर्जी भी आनी चाहिए। And when I say energy, I mean what guna are you in? Are you in tamaguna or rajaguna or sattvaguna? Most devotees begin in tamaguna when they're chanting. Everybody, you know. सो जो महाराज एनर्जी वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मतलब है सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। जो जो ज्यादातर भक्त हैं वो तमोगुण में जप स्टार्ट करते हैं। If you chant your rounds after a kirtan, you'll be in rajaguna. यदि आप कीर्तन के बाद में जपा शुरू करते हैं तो आप रजोगुण में होंगे। If you chant your rounds after Tulsi Puja, you'll be in sattvaguna. और आप तुलसी पूजा के बाद में जपा शुरू करोगे तो आप सतोगुण में होंगे। The main thing is to pick the time of day according to your schedule when you can chant all your 16 rounds at one time. That's 2 hours. तो आप जो है इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि आपके 16 राउंड जो है वो एक बार के अंदर जो है आप दिन के अंदर जब भी एक बार में आपके खत्म हो जाए। So what it basically means, early in the morning. तो इसके और क्या सुबह जल्दी के अलावा और कब कर सकते हो? तभी। Afternoon chanting, nighttime chanting, forget it. You know? जो दोपहर का जप है और रात का जप है उसका कोई मतलब नहीं I है। mean, many devotees have to chant then, but they understand everything, तो आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि दोपहर का जप और रात का जप उससे The earlier क्या you मतलब chant your निकलता है। rounds, the more taste you get. तो जितना जल्दी आप सुबह जपा करेंगे उसका उतना ही टेस्टी, उतना ही But, स्वाद। but that means you have to go to bed early. You can't be up at 10 o'clock just scrolling on your phone or anything like that. You have to go to bed early then. तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप लेट सोए, रात को जल्दी सोना पड़ेगा जल्दी उठने के लिए। So basically, that's how you do it. Once you get taste, then, oh, you're properly situated. Because then you just want to chant more and more and more because it's so delicious, so wonderful. That answer your question? Very good. तो आप जो है समझ गए महाराज ने जो उत्तर दिया कि आप सुबह रात को जल्दी सो के जल्दी उठ के आप। No. Anyone else? और किसी का प्रश्न है? हाँ? हाँ, वो तो What'd she say? Oh, okay. Yeah, I will do a great job. So I just talk one couple of minutes more about the chanting. So to see, some people get taste because they have a relationship with the Lord. Huh?
कुछ लोगों को जपा के अंदर स्वाद आता है क्योंकि उनका भगवान के साथ संबंध है. So we all start in Dasyaras. So Dasyaras, yes, Krishna, I'm your servant. Krishna, I'll do anything for you. Please give me a good guru. Please let me serve my guru properly. Please let me have faith. तो हमको जो है भगवान कृष्ण से जो है हम ये मांगते हैं, हमें हमारे गुरु की सेवा करने दो, हमें जो है गुरु के अच्छे से शरणागति होने दो. The process is first Shraddha. Shraddha. Shraddha, faith. Okay. Shraddha. जो ओके श्रद्धा, जो पहला जो कदम है वो है श्रद्धा. Then next is Sadhu Sangha. उसके बाद साधु संग. So you have Shraddha because you came here. तो आप जो है आपके पास में श्रद्धा थी इसलिए आप मंदिर आए. And now you're getting Sadhu Sangha because you're hearing from Sadhu. और चूंकि अब आप भागवतम सुन रहे हैं मतलब आप साधु संग कर रहे हैं. Next is Bhajana Kriya, इसके आगे है भजन क्रिया. where you start practicing what you've learned तो जो आपने सीखा है उसको आप जो है करना शुरू करेंगे in your everyday life. आपके जो दैनिक कार्यों के अंदर. And then from there, you start applying the chanting. Like the mothers, many mothers have Gopal at home. तो उसके बाद में जो है आप जपा करना शुरू करें. जैसे कई माताएं जो है अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल रखती हैं. So they're worshiping Gopal already in Vatsalya Ras. सो जो वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं वात्सल्य भाव के अंदर. So they have that relationship established already. तो उनका जो है संबंध है गोपाल के साथ. Whenever I go to a Grihastha house, Gopal is always there. जब भी महाराज किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं वहां पे लड्डू गोपाल मिलते हैं. And the mothers treat Gopal just like their son. और जो माताएं लोग जो हैं लड्डू गोपाल को अपने पुत्र So की that's तरह पालती Vatsalya हैं. Ras. Vatsalya Ras, they have their relationship. वात्सल्य रस है तो उनका संबंध है. Like that. So Krishna Nama and Krishna himself, Nami, they're the same. But we cannot see it. We cannot realize it. We just know it because it's in Shastra. तो हम जानते नहीं है लेकिन शास्त्रों से हम सुनते हैं कि कृष्ण नाम और कृष्ण जो है उनमें कोई भेद नहीं है. And Krishna has no rules or regulation about chanting his name. और कृष्ण भगवान जो है उनका जब नाम लेने का कोई भी नियम कायदा नहीं है. You can chant anytime, any place, anywhere. किसी भी समय पे कहीं भी आप जपा कर सकते हैं. Okay, so that's the name. Try to get a time where you can chant your rounds. Maybe you have to figure out, you have to be clever. You have to be clever in Krishna consciousness. कृष्ण भावना मृत में आपको चालाक होना पड़ेगा. Because Maya is out there saying, oh, don't you want to do this? Don't you want to do that? आपको माया जो है वो आपको प्रभाव डालेगी. अरे आपको वो करना है, आपको वो करना है. But I tell you truthfully, Maya is respectful to the devotees. लेकिन सच्ची बात महाराज बता रहे हैं कि माया जो है भक्तों के प्रति जो है वो श्रद्धा रेस्पेक्ट करती है. She's very respectful to the Vaishnavas. वो जो है वैष्णवों के प्रति बहुत आदर का भाव रखती है. But if you're a cheater, she'll snatch you down. लेकिन यदि आप चीट कर रहे हो तो माया आपको पकड़ेगी. But if you're a sincere, humble devotee, Maya will never disturb you. लेकिन आप सिंसियर हो तो माया आपको टच नहीं करेगी. Because we know what Maya is. So if we go to Maya, we go because we want to. She doesn't trick us. तो हम माया के पास जाएंगे. माया जो है सिंसियर वैष्णवों को ट्रिक नहीं करेगी. हम जाते हैं माया के पास. We know what Maya and what is not Maya. हमको पता है माया क्या है, माया क्या नहीं है. Okay, we begin with Advaita Acharya. अभी अद्वैताचार्य के बारे में. All right, this is the appearance day of Advaita Acharya. By his mercy alone, Mahaprabhu came. तो आज अद्वैताचार्य का प्राकट्य दिवस है. उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु आए. Advaita Acharya was born in 1834. 1834 के अंदर अद्वैताचार्य का जन्म हुआ. He was 50 years old when Mahaprabhu was born. जब वो 50 साल के थे जब महाप्रभु का प्राकट्य And he हुआ. knew he was born in a Brahmin family. वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए. And he knew from Shastra that it was time for the Yuga avatar to come. और शास्त्रों से उनको पता था कि अभी युग अवतार का समय आ गया है. But he was 50 already, and he was thinking, he's not coming quick enough. I have to make him come quicker. लेकिन वो 50 साल के हो चुके थे तो वो सोच रहे थे कि भगवान जल्दी नहीं आ रहे, मुझे उनको जल्दी लाना पड़ेगा. So Advaita Acharya had a Shalagram Shila, Nishinga Dev Shalagram Shila. अद्वैताचार्य के बाद में एक के पास में एक नरसिंह शिला थी.
And he'd go to the Ganga every day and worship this Nishinga with Ganga water and Tulsi Manjari. और वो डेली जो है गंगा नदी के पास में जाके जो है उस नरसिंह शिला की तुलसी और गंगा जल से आराधना करते थे And shouting loudly, he'd say, Bhagawan, Bhagawan, when are you coming? When are you coming? और वो ऐसे चिल्लाते थे भगवान आप कब आओगे कब आओगे And then he'd be crying, Bhagawan, Bhagawan, when are you coming? When are you coming? और वो क्राई चिल्लाते थे भगवान आप कब आओगे कब आओगे कब आओगे My heart is breaking seeing the condition of all the souls. मेरा हृदय टूट रहा है लोगों की स्थिति को देख के Back in those days in Mayapur, Navadvip, Tantra was the main pursuit. Everyone followed Tantra. तंत्र Tantra, yeah. उस समय जो है तंत्र विद्या का बहुत ज्यादा जोर था And there was no devotion to be found anywhere. भक्ति का कोई नामो निशान नहीं था People did bhakti in solitary seclusion. भक्ति करते थे तो बहुत अकेले में करते थे So Advaita couldn't take that. He said, please, you must come, you must come. Every day for years, not just 1 month or week, for years, he'd be weeping. Bhagawan, Bhagawan, when are you coming? You must come now. Kali Yuga is upon us. तो अद्वैत आचार्य को ये अच्छा नहीं लगता था तो वो जो रोते थे भगवान आप आओ आओ जल्दी आओ तो एक दिन के लिए नहीं बहुत सालों तक उन्होंने ऐसा किया भगवान आप आओ जल्दी आओ So then Mahaprabhu took birth on a very special moment. His mother, Sachi Mata, was 14 months pregnant. तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत शुभ घड़ी के अंदर जन्म लिया उनकी जो माता सची देवी थी वो 14 महीने तक Because गर्भवती he थी decided to appear on a full moon eclipse. उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होने का निश्चय किया था कि जो पूर्ण चंद्रमा का उस दिन Where everybody in India, from the Himalayas all the way to the Bay of Bengal, were in the Ganga chanting Hari Bol, Hari, Hari, Hari. तो उस समय पूरा भारत जो है गंगा के अंदर जो है ये जपा कर रहा था हरि बोल हरि बोल हरि बोल During the eclipse, that's what you do. You get into the water and then you chant mantras and chant when you're during an eclipse. तो ग्रहण के समय पे जो है लोग बाग क्या करते हैं कि गंगा नदी में जाके जो है भगवान का नाम उच्चारण करते हैं So Advaita Acharya worshipped the Lord, but when Mahaprabhu appeared, then he worshipped Advaita. तो जो है अद्वैत आचार्य ने पहले चैतन्य महाप्रभु का पूजा किया लेकिन जब महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने अद्वैत आचार्य का पूजा किया Because he was a little boy, Advaita was a grown man, so he'd always give pranams. And Advaita said, no, don't do that. But Mahaprabhu would do it anyway. तो चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे और अद्वैत आचार्य बड़े थे तो चैतन्य महाप्रभु उनको प्रणाम करते थे लेकिन अद्वैत आचार्य बोलते थे कि मत करो So as Mahaprabhu got older and more famous, he would still do it to Advaita Acharya. तो महाप्रभु बड़े हुए तो भी वो अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते थे Then Advaita said, I cannot take this any longer. Why is the Supreme Lord giving me dandavats? लेकिन अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगा कि परम भगवान मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं So he devised a plan where he could show the true position of Mahaprabhu. तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि चैतन्य महाप्रभु को उनकी एक्चुअल स्थिति बताएं So what he did was he started teaching Bhagavatam, but in a Mayavadi way. तो उन्होंने क्या किया भागवतम जो था उसका मायावाद व्याख्या देने लगे He would say, there's no need to worship the Lord's form. We can worship his abstract manifestation. तो वो बोलने लगे हमें को भगवान का जो साकार रूप है उसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है निराकार रूप में बच सकते हैं And he did this for a few days. और कुछ दिनों तक उन्होंने ऐसा किया And then the devotees came back to Mahaprabhu and said, Mahaprabhu, Advaita is teaching Mayavadism of Bhagavatam. तो भक्त लोग जो है वो चैतन्य महाप्रभु के पास में आए कि महाप्रभु जो अद्वैत आचार्य हैं वो मायावाद सिखा रहे हैं Mahaprabhu got so angry. He said, he is, and he rushed to Advaita's house. महाप्रभु को इतना गुस्सा आया कि अद्वैत आचार्य की तरफ भागे He said, I came to show that the Lord is personal, not impersonal. Why are you teaching Mayavadism? चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं जो भगवान के साकार रूप का आराधना करने के लिए सिखाने के लिए आया हूँ तुम मायावाद का प्रचार क्यों कर रहे And Advaita's acharya was an old man like this man there. And Mahaprabhu slapped him and he fell down on the ground. तो जो अद्वैत आचार्य थे वो उन बूढ़े व्यक्ति की तरह थे तो अद्वैत चैतन्य महाप्रभु ने उनके एक खींच के मारी वो गिर गए
he was angry like when Nityananda got struck in the head. He was angry like that. वो इतने गुस्सा थे जैसे जब नित्यानंद प्रभु को जगाई मदाई ने मारी थी तब महाप्रभु गुस्सा थे, उसी प्रकार से अद्वैताचार्य भी गुस्सा थे. So when Advaita got knocked on the ground, he jumped up like a young boy. He says, "Now I proved who's superior. Now I proved who's superior." तो जैसे ही अद्वैताचार्य जमीन पे गिर गए वो नाचने लगे कि ना मैंने सिद्ध कर दिया कि जो है चैतन्य महाप्रभु आप परम भगवान हो. Now you'll never give Dandavas to me again because an inferior cannot slap a superior. तो अभी आज के बाद आप मुझे कभी दंडवत मत देना, क्योंकि जो सीनियर होता है वो कभी भी सीनियर को मारा नहीं जा सकता. That's how clever Advaita was. तो Very, इस very प्रकार से clever. अद्वैताचार्य इतने चालाक थे. That's one famous pastime. ये प्रसिद्ध जो है लीला है. Then there's another one. This involves Mahaprabhu wanted to teach the world a lesson. इसके अलावा एक दूसरी भी है जिसमें जो है महाप्रभु जो है सबको एक पाठ पढ़ाना चाहते थे. There's two things that Mahaprabhu could never tolerate. One was sannyas dharma, compromise in the sannyas ashram. तो चैतन्य महाप्रभु दो चीज कभी भी सहन नहीं कर सकते थे. एक तो सन्यास धर्म के अंदर समझौता करना. From the time Mahaprabhu was 24 years old until he left this world, he only spoke one time to his mother. चैतन्य महाप्रभु 24 साल के जब सन्यास ले लिए थे उसके बाद में सिर्फ एक बार उन्होंने अपनी माता से बात की. He asked his mother, "Where should I reside?" And his mother said, "If you want to please me, then reside in Jagannath Puri because the devotees coming back and forth, they can tell me your movements." तो बस एक बार ये बात करी थी उन्होंने अपनी माँ से सन्यास लेने के बाद में कि मैं कहाँ पे रहूं. तो उनकी माँ ने कहा था यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो पुरी में रहो ताकि भक्त लोगों से आपकी खबर मिलती रहे. Then Mahaprabhu said, "Yes, mother, for you I will reside in Jagannath Puri." तो महाप्रभु ने कहा ठीक है माता, आपकी जैसी इच्छा है मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा. But really, he did this for us because now we have connection with Jagannath Puri. लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने लिए किया क्योंकि हम जो है हम जगन्नाथपुरी में जा सकते हैं. Because actually we have our strongest relationship with Vrindavan Dham and Navadvip Dham. But because Mahaprabhu went to Puri and had so many pastime places there at Gundicha and Tota Gopinath and all these places, then we had the opportunity to connect to Jagannath Puri. तो वैसे तो हम वृंदावन मायापुर से कनेक्टेड है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें जगन्नाथपुरी से भी कनेक्ट कर दिया. गुंडीचा वो सब जगह हम वहां पे जाके जो है कनेक्ट हो सकते हैं. So Mahaprabhu had a rule. He no compromise in the sannyas ashram. तो ये महाप्रभु का एक नियम ये था कि सन्यास आश्रम से कोई समझौता नहीं. So he had one disciple called Junior Haridas. उनका एक शिष्य था जूनियर हरिदास. And Junior Haridas saw that Mahaprabhu wasn't getting first class basmati rice. तो एक बार महाप्रभु ने उससे एक बासमती, उसके सेवा ये थी कि बासमती राइस ले जाके महाप्रभु को देता था. So he was thinking, I know one lady that has Govinda Bhog rice. तो उन्होंने जो जूनियर हरिदास ने सोचा कि मैं एक स्त्री को जानता हूँ जिसके पास गोविंद भोग चावल है. She was a very old Vaishnavi. Everybody respected her as mother. वो बहुत बूढ़ी माता जी थी और सभी जने उनका आदर देते थे. So Junior Haridas went to her house to get this Govinda Bhog rice. तो जूनियर हरिदास उन माता जी के पास में गए गोविंद भोग चावल लेने के लिए. But the time he picked to go there was when he knew her attractive niece would be there. Her very beautiful niece would be there at the time he went to get the rice. लेकिन जब जूनियर हरिदास उनसे चावल लेने के लिए गए तो उनकी जो सुंदर भतीजी थी वो भी वहीं थी. So he didn't really go there for the rice. He went there to see the beautiful girl. तो वो चावल लेने के लिए नहीं गए थे. वो जो है उनकी जो सुंदर भतीजी थी उनको उधर उधर गए थे. It was like a package deal. He got the rice, but he got to see the girl too. तो एक प्रकार से दोनों काम एक साथ करने के लिए गए थे, चावल लेने के लिए भी और उनकी जो सुंदर भतीजी थी And उसको by देखने. eye contact and by body language, he interacted with her. और जो आंखों के माध्यम से और शरीर की भाषा के माध्यम से उन्होंने जो है वो जो सुंदर भतीजी थी उनसे इंटरेक्शन किया. But Junior Haridas didn't understand that Mahaprabhu was Paramatma also. He was Paramatma in the girl's body and Paramatma in his body. लेकिन जूनियर हरिदास जो है ये भूल गए थे कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं परमात्मा के रूप में जो है उस भतीजी के शरीर में भी है और जूनियर हरिदास के शरीर में भी है. With the girl, no problem. No blame on the girl. But on Junior Haridas, he made aparad. Mahaprabhu told Saro Damodar, tell Haridas he's no longer welcome to have my darshan.
तो जो है चैतन्य महाप्रभु ने उस भतीजी का तो अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन जूनियर हरिदास को, उनको स्वरूप दामोदर को बोला आज के बाद में ये मेरे से नहीं मिल सकता। So all the Vaishnavas being merciful, they said, no, no, you, how can you do that? How can, Mahaprabhu said, I have spoken. That is the end of the story. चैतन्य महाप्रभु को सभी वैष्णवों ने बोला महाप्रभु महाप्रभु कोई बात नहीं, कोई बात, लेकिन महाप्रभु ने बोला दिस इज फाइनल, मैं ये बस इसके बाद कुछ आगे बात नहीं करना चाहता। So Haridas was never able to see the Lord again उसके बाद में हरिदास कभी भी महाप्रभु को नहीं देख पाया, because Mahaprabhu was very strict with that. क्योंकि महाप्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। He never talked to a woman after he saw his mother when he first took sannyas at 24. सिर्फ उन्होंने एक बार अपनी माँ को जो है संन्यास लेने के बाद में, संन्यास लेने के बाद में एक बार देखा था, उसके बाद में किसी स्त्री से नहीं मिले। That's how strict he was. So in this way, those are one thing. The other thing was Vaishnava aparad. Mahaprabhu could not tolerate Vaishnava aparad. और दूसरी चीज जो महाप्रभु सहन नहीं कर सकते थे वो थे वैष्णव अपराध। So when Advaita Acharya was a younger man, he set up a Sanskrit school in Navadip. तो जब अद्वैत आचार्य जो यंग थे तब वो एक संस्कृत स्कूल चलाते थे नवदीप में। And Mahaprabhu's elder brother Vishwarup used to go to this school. और जो महाप्रभु के जो बड़े भाई विश्वरूप थे वो इस अद्वैत आचार्य के स्कूल में जाते थे। And along with the Sanskrit, Advaita Acharya was teaching bhakti. और संस्कृत के साथ साथ अद्वैत आचार्य भक्ति भी सिखा रहे थे। And it was so attractive that Vishwarup just had to go every day. Every day he had Advaita Acharya's darshan. और वो इतना आकर्षित, विश्वरूप इतना आकर्षित थे कि वो डेली जाते थे अद्वैत आचार्य से भक्ति के बारे में सुनने के लिए। So one time when Vishwarup came home, past his hut, he heard his mother and father planning his marriage. तो एक बार जब विश्वरूप जो है उन्होंने सुना उनके माता पिता जो है उनकी शादी का योजना बना रहे हैं। In his heart he said, no, 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 I cannot do this. And so that night he packed when they were sleeping and went and took sannyas. तो उनके हृदय में विश्वरूप ने सोचा कि नहीं नहीं मैं शादी नहीं कर सकता, तो उस रात उन्होंने क्या किया, सामान पैक किया और चले गए। All grihastas know in India, there's one word they never want to hear with their sons. They don't want to hear the word sannyas. सब भारत के अंदर कोई भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चे से एक शब्द नहीं सुनना चाहते, They don't want to hear the word sannyas. वो संन्यास शब्द नहीं सुनना चाहते अपने बच्चों से। That does not digest in a grihasta family. ग्रस्त जीवन में जो माता पिता हैं उनको ये नहीं पचेगा। So of course, Jagannath Mishra, the father, and Sachi Mata were heartbroken. तो जगन्नाथ मिश्र और सची माता का जो हृदय टूट गया। And Jagannath Mishra left his body soon after. और उसके थोड़ी जल्दी ही जगन्नाथ मिश्र ने अपना शरीर छोड़ दिया। So later, when Mahaprabhu got older, he started also going to Advaita Acharya. उसके समय जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो वो भी जो है अद्वैत आचार्य के पास में जाना शुरू किए। And one time his mother, under her breath, she said, I already lost one son. I lost my husband. Who's going to take care of me if my other son takes sannyas? तो एक बार सची माता से जो है थोड़ा सा ये निकला मुंह से कि मेरा एक बेटा जो सन्यास ले गया है, अभी ये दूसरा भी सन्यास ले लेगा तो मेरी कौन परवाह करेगा। So she started thinking, I have to get him married. तो उन्होंने सोचा कि मुझे जो है महाप्रभु का शादी करा देना चाहिए। So she had brought some girls for Mahaprabhu to see, but he wasn't interested. तो वो महाप्रभु के लिए लड़की देख रही थी, लेकिन महाप्रभु जो है उनकी कोई रुचि नहीं थी। And then she was thinking he's influenced by Advaita Acharya. तो उनको लगा कि शायद ये भी अद्वैत आचार्य का इन पे प्रभाव पड़ा है। So Advaita means non-dual. तो अद्वैत का मतलब होता है जो डुप्लीसिटी, मतलब जिसमें द्वैत भाव नहीं हो। So Sachi Mata just thought, she thought like he's non-dual to others, but to me he's dual, means he's a double dealer. हाँ, तो उन्होंने सिर्फ मन में सोचा सची माता ने कि अद्वैत आचार्य जो है उसका मतलब होता है जो ड्वेल नहीं हो, दो स्वभाव नहीं है, लेकिन मेरे प्रति उनका दोहरा स्वभाव है। So then Mahaprabhu, as super soul, he understood that she had made an offense against Advaita Acharya. लेकिन महाप्रभु तो परमात्मा है, उनको समझ में आ गया कि उनकी माता ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। So he told Saro Damodar, my mother is no longer welcome to have my darshan. तो उन्होंने स्वरूप दामोदर को बोला कि मेरी माँ भी मेरा दर्शन नहीं कर सकती। I never heard of this in my life. Who can refuse their mother? Who can reject their mother? Nobody can reject their mother. The father can be rejected, no problem. But the mother can never be rejected. आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने अपनी माँ का
त्याग कर दिया हो। पिता का त्याग तो सुना होगा आपने, If a लेकिन माता father का is कर not, दिया। if a father is performing sinful activities, a devotee can reject his father. यदि पिता यदि पाप में जीवन बिता रहे हैं तो भक्त लोग जो है अपने पिता का त्याग कर देते हैं। But it's the duty of a son to protect his mother. It's the duty of the son is to protect the mother. हाँ, जो भक्त की जो है कर्तव्य है, उसकी माता की रक्षा करना भक्त का कर्तव्य है। So he rejected his mother. The Supreme Lord rejected his mother. And Sarl Damodar and said, how can you reject your mother? What did she do? We cannot accept that. Mahaprabhu said, my word is final. तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ को रिजेक्ट कर दिया, तो स्वरूप दामोदर ने बोला, अरे आप अपनी माँ का ऐसे आप परित्याग कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मेरे को इसके आगे कोई बहस नहीं करनी, ये मेरा फाइनल निर्णय है। So Swarup Damodar, he's Mahaprabhu's closest associate. He could understand that she must have made some offense. तो स्वरूप दामोदर जो थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनको समझता था कि इसका मतलब उनकी माँ ने कोई अपराध किया है। So he went to Sachima, said, Sachima, come with me. She said, where are we going, my son, my son? She said, we're going to go see Advaita Acharya. तो स्वरूप दामोदर जो है सची माता के पास में गए, वो बोले कि सची माता को कि आओ मेरे साथ अद्वैत आचार्य के पास। So Advaita Acharya used to sing and dance sometimes by himself, and he'd just become intoxicated and fall down unconscious. तो अद्वैत आचार्य जो थे कीर्तन के अंदर नृत्य करते थे और कई बार जो है अचेत होके गिर जाते थे। So when Saro Damodar brought her there, he was dancing and singing, and after some time he fell down unconscious. तो स्वरूप दामोदर जब वहां पर आए तो अद्वैत आचार्य उस समय जो है कीर्तन करते हुए जो है वो कीर्तन करते करते कभी अचेत होके गिर जाते थे। So then Saro Damodar said, quickly take his foot dust तो स्वरूप दामोदर ने सच्ची माता को बोला, जल्दी से उनके चरणों की धूली ले लो, and ask for his forgiveness when he comes conscious. और जैसे ही वो उनका चेतना वापस आती है तो उनसे फिर क्षमा याचना करो। So she did that, and then Mahaprabhu said, yes, now I can accept you. तो उन्होंने सच्ची माता ने ऐसा ही किया। तब महाप्रभु ने बोला, ठीक है ना, अभी मैं अपनी माता को स्वीकार करता हूँ। If anyone makes an offense against a Vaishnava, you must go to that Vaishnava themselves and beg their forgiveness. तो इसलिए आप यदि किसी वैष्णव के प्रति आप अपराध करते हैं तो उस वैष्णव के पास में जाओ और उनसे अपने क्षमा याचना करो। Anyway, only Kanistas take offenses, and only Kanistas make offenses. सिर्फ कनिष्ठ जो होते हैं वही वैष्णव वही अपराध को लेते हैं। But if by accident you make an offense, just say, please forgive me. I did not mean to. And the Vaishnava will bless you. लेकिन आपसे कोई अपराध हो जाता है तो आप उनके पास में जाके क्षमा याचना करो कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, क्षमा याचना करो। So this lesson he taught the world, Vaishnava aparad is not acceptable. तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने ये अध्याय पूरी दुनिया को सिखाया कि वैष्णव अपराध बिल्कुल स्वीकार्य And नहीं he है। taught this to his Bhakta Advaita Acharya. तो ये अद्वैत आचार्य के माध्यम से उन्होंने सिखाया। Advaita means non-dual. That means he's non-different from Bhagavan himself. And Acharya means one who preaches by his actions. तो अद्वैत का मतलब होता है नॉन डुअल, मतलब जो भगवान से अभिन्न है, और जो आचार्य वो अपने एग्जाम्पल से सिखाते थे। Then also it was Advaita Acharya who gave Mahaprabhu the final message that it's time for him to go. और ये अद्वैत आचार्य ही थे जो जिन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु को आखिरी मैसेज दिया कि अभी आपके जाने का समय हो गया है। Because the Sankirtan movement was so successful all over India, Advaita Acharya wrote, the medicine you have come to give has been given, and everyone has taken the medicine. तो अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि जो आप दवाई पूरी दुनिया को देने आए थे, महा संकीर्तन यज्ञ, वो बहुत सफल है पूरे भारत के अंदर, अभी जो है आप जा सकते हैं। So Mahaprabhu, when he read the note, Nityananda was with him. He said, aha. So Advaita called me here for a service, and now he's dismissing me and sending me back. तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहां पे मौजूद थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अद्वैत आचार्य ने पहले तो मुझे बुलाया, अब मुझे भेज रहे हैं। But he was right. Mahaprabhu would finish his mission. Because we're here now still doing his mission, Sankirtan, Yagya, all over the world. तो अद्वैत आचार्य वैसे सही बोल रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए आए थे संकीर्तन, वो वास्तव में पूरे भारत में बहुत सक्सेसफुल हो चुका, सफल हो चुका था। Mahaprabhu said, in every town, city, and village, my name will be sung. चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि सभी गांवों के अंदर जो है मेरा नाम गूंजेगा। It was Srila Prabhupada who fulfilled this prophecy. और ये शिला प्रभुपाद है जिन्होंने उनकी ये भविष्यवाणी Every सफल की। town, city, and village, Gaur Premanandi. सभी गांवों के अंदर गौर प्रेमानंदी। So we're very fortunate to be connected to the Brahma Madhava Gaudiya Vaishnava Sampradaya. तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म माध्यम गौड़े संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं। Our sampradaya is called the Bhagavat, not called, it's a Bhagavat
sampradaya, which means wherever the current of bhakti is flowing, that's where it appears. Understand? Did you understand? The Bhagavat Parampara means full of Bhagavat. हमारी जो परंपरा है भगवत परंपरा है, मतलब भक्तों से भरी हुई है. I mean, Gorakishore did not take initiation from Bhaktivinoda Thakur, but the bhakti line came through him. Huh? Jagannath, Jagannath Das Babaji didn't give Bhaktivinoda Diksha. He gave him the bhakti line, like a current, like when you get the internet, you plug in. So the line came through Jagannath to Bhaktivinoda to Gorakishore to Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada to our Prabhupada, then to the gurus after. You understand? Everyone understand that? तो ये जो Yes. है परंपरा जो है ये मतलब जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य नहीं थे और गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ शिष्य नहीं थे. तो फिर ये परंपरा कैसे है? ये भक्ति परंपरा है. करंट जो है करंट एक से जुड़ता जुड़ता, तो ये भक्ति की परंपरा है. ये शिष्य परंपरा वैसे नहीं है, भक्ति की परंपरा है. Madhavendra Puri was the disciple of Lakshmipati. माधवेंद्र पुरीपाद जो है लक्ष्मीपति के शिष्य थे Nityananda Prabhu was also the disciple of Lakshmipati. और नित्यानंद प्रभु भी लक्ष्मीपति के शिष्य थे. Madhavendra Puri gave Advaita Acharya Diksha. माधवेंद्र पुरीपाद ने अद्वैताचार्य को दीक्षा दी. In Vaikuntha, Madhavendra Puri is the Kalpaviksha tree. तो वैकुंठ के अंदर जो माधवेंद्र पुरीपाद है वो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है. And Advaita Acharya is Mahavishnu. और अद्वैताचार्य महाविष्णु है. But he was so happy to get Diksha from Madhavendra Puri. लेकिन अद्वैताचार्य इतने प्रसन्न थे माधवेंद्र पुरीपाद से दीक्षा लेने के लिए. Because Madhavendra Puri introduced Sringara Ras to क्योंकि our disciplic succession. क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद ने श्रृंगार रस का जो है वो पूरे संसार के अंदर उसका वो दिया था. Madhavendra Puri revealed the glories of Srimati Radharani. माधवेंद्र पुरीपाद ने श्रीमती राधा रानी का जो ग्लोरी थी वो संसार के सामने प्रकट की. Before Madhavendra Puri, Krishna was worship alone. माधवेंद्र पुरीपाद से पहले कृष्ण के अकेले की सेवा होती थी. After Madhavendra Puri, Srimati Radharani was put next to him on his left side. और माधवेंद्र पुरी के बाद में राधा रानी भी कृष्ण के साथ में उनके बाईं ओर खड़े होकर उनकी भी आराधना होने लगी. So this is the glories of Advaita Acharya. This is his day. We're very happy that he called Mahaprabhu to bless us. And I have 2 minutes for questions. तो ये बहुत आज बहुत शुभ दिन है. अद्वैत आचार्य उनका जो अभी महाराज ने उनकी ग्लोरी बताई, तो जो है आज बहुत शुभ दिन है. आप कुछ क्वेश्चन 2 मिनट आपके पास में है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. I mean, I could talk longer, but some temples have rules, and so I have to follow the rules. महाराज कुछ और ही बोलना चाहते हैं, लेकिन मंदिरों के नियम होते हैं, तो यहाँ पे नियम है 9 बजे तक का, तो महाराज रूल को फॉलो करना चाहते हैं. But questions I can answer. लेकिन प्रश्न वो महाराज बोल सकते हैं. Not Haridas. Junior Haridas. Yeah. Stachima. No. तो इनका प्रश्न ये है कि महाराज ने 2 लीलाओं का वर्णन किया. एक तो जूनियर हरिदास का और सची माता का. उन्होंने जो दोनों ने जो अपराध किया था, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु हम इतने अपराध करते हैं, तो क्या हमारा को रिजेक्ट कर देंगे चैतन्य महाप्रभु? Okay, there's 2 types of aparads. 2 प्रकार के अपराध होते हैं. Accidental and intentional. एक तो होता है दुर्घटनावश और एक होता है जानबूझकर. Accidental is considered like a dry apparat. जो दुर्घटनावश हो जाते हैं वो It's not so serious. वो इतने गंभीर नहीं है. By chanting your 16 rounds every day, that will go. वो जो आप 16 माला जप करते हैं उससे चले जाते हैं. As long as you don't make aparat against a Vaishnava. जब तक लेकिन इसमें कंडीशन है कि आप वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करें. But the intentional aparats, actually, I don't know any Vaishnavas that do intentional aparats. I do not know any Vaishnavas who do intentional aparats. महाराज बोल रहे हैं कि मैं ऐसे किसी वैष्णव को नहीं जानता जो जानबूझकर अपराध करते हैं. I mean, maybe they are, but I never met one. महाराज बोलते हैं हो सकता है हो, लेकिन मैं कभी ऐसे वैष्णव से नहीं मिला. It's not the nature of a Vaishnava to intentionally make an offense. ये वैष्णव ऐसा नहीं करता कभी जानबूझ के अपराध करे. And intelligent Vaishnavas know there will be a reaction that'll come back to them. और जो बुद्धिमान वैष्णव है वो जानता है इसकी क्या रिएक्शन होगी. So normally we do not make. The little apparats that we make are just dry. You make, maybe you walk into the temple and you don't give dandavas to the deities.
तो छोटे मोटे अपराध जो होते हैं, वो दुर्घटनावश हो That's जाते हैं, aparad, वो for वो sure. वो माफ हो जाते हैं। जैसे आप मंदिर में आए, आपने दंडवत नहीं दिया, Or you see a sannyas and you don't give dandavats. और जैसे आपने When किसी the first time you see him. और जैसे आपने सन्यासी को पहले बार देखा और उनको दंडवत नहीं दिया, But the sannyas will not blame you. लेकिन He सन्यासी just आप says, okay, he's the kanista. He'll think he's the kanista. He don't know. लेकिन सन्यासी इस अपराध को नहीं लेंगे, आपने उनको प्रणाम नहीं किया तो, लेकिन आपके लिए अपराध Vaishnavas है। are here to help each other grow and evolve. Vaishnavas are here to help each other grow and evolve. हाँ, वैष्णव जो है वो चाहते हैं सभी की प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। So what aparad did you make recently? तो आपने क्या अपराध किया है रिसेंटली? Ah, Saruninda. No. Saruninda Krishna will not tolerate. You know, fault find with yourself first. साधु निंदा कृष्ण सहन नहीं करते, तो आपको फॉल्ट फाइंडिंग, आपको दोष निकालना है तो पहले खुद के दोष निकालो। Yeah, never find fault with a devotee. Every devotee is trying to do their best according to their realization. सो दोष दूसरे भक्तों में दोष मत निकालो, सब भक्त अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। Be forgiving, be tolerant. क्षमाशील बनो और सहनशील बनो। Follow Mahaprabhu's third sloka in Shikastam Trinada Pisunichena. That's how we should always be. जो त्रणादपि सुनिचेन है, इस श्लोक को आप पालन करो। Be more tolerant than a tree, more humble than a blade of grass. पेड़ से भी ज्यादा सहनशील और घास से भी ज्यादा नम्र। And that's how we should chant the holy name. और यही तरीका है जिससे हम 16 माला का जो जप करते हैं। This is very important. Very good question. Anyone else? Yes, first. He's saying you said that two things Chaitanya Mahaprabhu did not accept. Please comment again about. Okay, the two things he would not accept is Vaishnava aparad पहला था वैष्णव अपराध and any compromise in the sannyas ashram. और संन्यास Those आश्रम two में things. किसी भी प्रकार का समझौता। महाराज वन क्वेश्चन मींस एक्सीडेंटल वैष्णव अपराध। Intentional Vaishnava aparad. No, if Vaishnava aparad is accidental, then No, I'm talking about intentional aparad. If you curse a devotee, for example, I know some devotees that cursed each other. They took their Brahman and said, I curse you. Nah, Mahaprabhu's not accepting that. तो कुछ लोग भक्त लोग क्या करते हैं कि अपने ब्राह्मण थ्रेड को जो ऐसे लपेट के बोलते हैं मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो महाप्रभु उसको स्वीकार नहीं करते। Or taking another devotee's belongings. और Or lying. Or cheating. Those are the types of aparads. Lying, cheating. झूठ बोलना, धोखा देना वैष्णवों को, But वो devotees don't do these things. You know? But sometimes devotees have arguments. But sadhu ninda do not do anytime. लेकिन साधु निंदा कभी मत कीजिए। That reaction will come back to you. Sure. You know? The reaction will come back to the person. हाँ, उसकी प्रतिक्रिया होगी साधु निंदा की। Prabhu, you had one. Anyone else? Yes, please. He is asking what is the logic of 16 round? Ha 16 rounds is like the minimum rounds that we do in Kali Yuga. जो 16 माला जो है वो कलयुग में हमें मिनिमम जो है 16 माला करनी होती है। In the beginning, Prabhupada said chant 64 rounds. शुरू में प्रभुपाद ने बोला था 64 राउंड का 64 But माला people करो। were not able to chant. लेकिन लोग बाग के बस की नहीं थी, So then he cut it to 32 rounds. तो उन्होंने फिर 32 के लिए बोला, 32 And then करो। people still weren't able to chant. 32 भी उनके बस की नहीं So थी। then they said, okay, 16 is the final line. तब उन्होंने 16 का निश्चय किया कि 16 से कम नहीं। Without taking bath, can we chant? Anywhere you can chant. Yeah. No rules and restrictions for chanting. कोई नियम नहीं है, कैसे भी कर सकते हो। From Mahaprabhu's own words. ये महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के खुद के शब्द है। Before you do Vedic rites, before you chant mantras, before you worship Tulasi, before you do deities, you must snan. विग्रह सेवा और ये बाकी सब चीजों के पहले आपको स्नान करना चाहिए। And you must snan before sunrise or you're contaminated the whole day. और जो सूर्य उदय होता है उससे पहले भी आपको स्नान करना चाहिए, नहीं तो For आप you, पूरे no दिन दूषित problem. रहते हैं। But for pujaris, you know,
आपके लिए नहीं, पुजारियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। Grihastas, they have some less restrictions. But for brahmacharis and sannyas, pujaris must take bath before sunrise or else you're contaminated the whole day. तो पुजारियों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, उनको सूर्योदय से पहले स्नान लेना ही चाहिए, नहीं तो पूरे दिन वो दूषित है। If a pujari takes his bath after sannyas, he cannot go on the altar for that day. यदि पुजारी जो है सूर्योदय के बाद में वो नहाया है तो अल्टर में नहीं जा सकता। But most of us, we take a bath before Mangalarati, so there's no problem. तो आप सब लोग तो खैर मंगल आरती के पहले स्नान कर problem. लेते हो, इसलिए कोई समस्या नहीं है। प्रभु जी का एक पर्सन है। Yes. He is asking about you, how you get connected to ISKCON, Hey, your Baba. realization. We're talking about Advaita Acharya. If you want to make me Advaita Acharya, I do not accept. महाराज बोल रहे हैं कि आप मुझे अद्वैत आचार्य बनाओगे तो मत No, बनाओ। we're glorifying Advaita हम Acharya. अद्वैत आचार्य के बारे में बात कर रहे This हैं। is a big day. His temple is in Shantipur. And he had the deity Mara Mohan and he had his Nishinga Shalagram. तो शांतिपुर में उनके विग्रह हैं मदन मोहन और नरसिंह शिला। These deities are still there now. अभी भी है वो वहां पे। So whenever you go to Mayapur, Shantipur is about 20 miles away. You go there, get darshan at Advaita Acharya. तो कभी आप मायापुर जाते हो तो वहां से 20 मील दूरी पे है, वहां पे आप जाओ, उनके दर्शन करो। I mean, how to please Chaitanya Mahaprabhu? चैतन्य महाप्रभु को कैसे प्रसन्न करें? The easiest way to please Chaitanya Mahaprabhu, what do you think? Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's the easiest way. And if you want to get extra mercy, you go through Nityananda Prabhu. Because Mahaprabhu accepts whoever Nityananda accepts. तो उनका प्रश्न ये था कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करें, तो महाराज बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र है उनकी कृपा प्राप्त करने का तरीका, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको कुछ चाहिए तो आप नित्यानंद प्रभु के थ्रू जाओ। नित्यानंद प्रभु जिनको भी स्वीकार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उनको स्वीकार करते ही करते हैं। Narottam Thakur wrote, Hina Nitai Vina Bai, Radha Krishna Paite Nai. If you get Nityananda, you get Mahaprabhu. If you get Mahaprabhu, you get Radha Krishna. तो नरोत्तम दास ठाकुर ने बोला है कि यदि आपको नित्यानंद मिल गए मतलब महाप्रभु मिल गए, और महाप्रभु मिल गए मतलब राधा कृष्ण मिल गए। But if you go to Mahaprabhu direct, it's not sure you get him. लेकिन अभी आप चैतन्य महाप्रभु के पास में सीधे सीधे जाएंगे तो गारंटी नहीं है मिलेंगे कि नहीं। And if you try to go to Radha Krishna direct, you surely do not get them. और राधा कृष्ण के पास में सीधे सीधे जाएंगे तो निश्चित रूप से हम मिल ही नहीं सकते। So we go through Nityananda and we get everything. तो इसलिए नित्यानंद के माध्यम से जाता है तो हमको सब कुछ मिल जाता है। Nityananda not only gives you, he gives you the red carpet to get there. नित्यानंद प्रभु सिर्फ आपको स्वीकार ही नहीं करते, आपको जो है पूरा एकदम बिछाएंगे पाए आपको वहां तक जाने के लिए। Yeah. Develop a relationship with Nityananda. Some kind of relationship. You know, he's so beautiful, so strong. Nityananda, when he was on this planet, he dressed just like he did as Balaram. Blue silk saris, gold jewelry, earring in one ear, just like Balaram. तो नित्यानंद प्रभु जो थे बलराम जी की तरह ही अपना ड्रेस रखते थे। एक कान में कुंडल, नीले कलर के वस्त्र, यहाँ पे ब्रेसलेट, इस प्रकार एकदम बलराम जी की तरह ही वेशभूषा रखते थे। Big, strong, robust body, bigger than Mahaprabhu. His shoe size is bigger than Mahaprabhu's. जो नित्यानंद प्रभु का जो शू साइज, Yeah, and body was bigger. उनका जो शरीर था, वो पैर था, वो महाप्रभु से बड़ा था। This is the Supreme Lord. He comes here to enjoy his pastimes, which is the Sankirtan movement, and to deliver all the souls in creation, giving them Krishna prema by the medium of Hari Nama. तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से धराधाम पे आए हरि नाम के माध्यम से सबका उद्धार करने के लिए। I mean, I know you don't want to go, and I don't want to go either. So do I have to go or what? How we do? What's the who gets the decisions here? Should I talk a little more? Yes or no? महाराज पूछ रहे हैं कि कुछ थोड़ा समय और ले सकता हूँ, आप में से कोई Today is my last day. Tomorrow I go back to Mayapur. महाराज कल जो है मायापुर जा रहे हैं, इसलिए क्या महाराज थोड़ी देर और ले सकते हैं? I had a very wonderful time here with all of you. महाराज बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ। So many nice devotees here. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। From the congregation and from the temple, both. जो कांग्रीगेशन जो है वो वाले भक्त भी और मंदिर के जो भक्त हैं दोनों ही बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। These community temples are very successful everywhere. तो ये जो कम्युनिटी मंदिर जो है, ये इस प्रकार के जो मंदिर हैं, ये सभी जगह बहुत सफल है। So
Any more questions? Yes. To take shelter of Nityananda Prabhu. उनका Yeah. उनका प्रश्न है कि अब नित्यानंद प्रभु की शरण में कैसे जाएं? Nityananda Prabhu is the original Guru Tattva. नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व हैं. So to take shelter of Nityananda, you have to take shelter from Guru. तो नित्यानंद प्रभु की शरण लेने का मतलब गुरु की शरण लो. Do you have a Guru? आपके गुरु हैं? Ah, yeah. I'm your Siksha Guru too, but do you have a Diksha Guru? Yeah, you must make the next step. Then you can take shelter of Nityananda. तो महाराज बोल रहे हैं कि आप पहले दीक्षा ले लो, उसके बाद में अगला कदम है नित्यानंद प्रभु But की you have शरण. to take Harinam next. You have to take Harinam first. Huh? लेकिन पहले हरि नाम लो. You must take the Bhakti Shastri course भक्ति शास्त्री कोर्स like करो. that, step by step. you कदम know. धीरे धीरे एक एक कदम ऊपर उठो. Don't rush. Take your time. Pick the Guru that fits in your heart and just surrender. तो धीरे धीरे गुरु की शरण लो, उनको अपने हृदय में. Choosing the Guru is the most important thing in a Prabhu's life. तो ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है गुरु you का should- चुनाव You करना. should take your time. There should be no rush, no haste. इसमें Huh? जल्दबाजी मत करो, अपना समय लो गुरु का चुनाव करने में. And the second most important thing is when you choose a wife. और दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपनी पत्नी का चुनाव करना. Yeah. Everybody cannot be brahmachari. सब कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सकता. And only 1% of brahmacharis can be sannyas. और कोई एक ब्रह्मचारी है वो सन्यासी I बनता है. mean, there's 4 ashrams. 4 आश्रम है. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, sannyas. ब्रह्मचारी वानप्रस्थ. It's a natural procedure. No problem. Understood? Yes, Prabhu. He's saying for today evening he is giving katha on Nityanand Prabhu. He is delivering katha. So he is seeking your blessings for that. For Nityananda Prabhu? Yeah, from No, today. tell him today he should give Harikatha on Advaita Acharya. महाराज बोल रहे हैं कि आज अद्वैत आचार्य के बारे में बताओ. And then Nityananda will bless you. उसके बाद में It's नित्यानंद Advaita Acharya's day. आज अद्वैत आचार्य का दिन है. तो Gaur आज अद्वैत आचार्य का दिन है. Premanandi. Gaur Hari Hari Premanandi. Bol. महाराज one question. Yes. You told Vaishnava Aparadh 2 category. One is unintentional and one is intentional. One is accidental, one is intentional. Accidental. So what about accidental Vaishnava Aparadh? No, I told you by chanting your rounds. Accidental Vaishnava Aparadh go? By chanting. Accidental by chanting your rounds and following Ekadashi. Okay, accidental yeah, Vaishnava Aparadh. They're not strong. They're not strong. They're not strong apparatus. And they may not even be considered apparatus. But you may think they're apparatus. So then that's why. Chanting. Maybe you have to chant extra 16. That's right. Yeah. Sometimes if you make apparat, you have to chant extra rounds. Or maybe you fast for that day. You know? There's other things you can do. कई बार आपसे वैष्णव अपराध हो जाता है तो आप एक्सीडेंटल जो है तो आप 16 माला का जप करो और उस दिन उपवास रखो. In India, if in the old days when someone used to make aparad, they jump in the Ganga with all their clothes on. तो पहले के जमाने में जो कुछ अपराध हो जाता था तो भक्त लोग गंगा में Then the Ganga would purify them immediately. Or you go serve a cow. There's many things you can do. Krishna gives many opportunities. आप गायों की सेवा कर सकते हो. तो कृष्ण Gomata seva, Ganga seva, गंगा सेवा, गो सेवा, तो आप कई Nam seva, नाम सेवा, हरि नाम Vaishnava सेवा, seva, वैष्णव सेवा, but always some form of seva. लेकिन सभी कुछ सेवा मतलब जो है आप करेंगे तो अपराध से बच सकते हैं. You can do Nirjala on any Ekadashi. आप जो है निर्जला रख सकते हैं एकादशी. Any Ekadashi you can do. कोई भी एकादशी जो है You आप know? निर्जला कर सकते हैं. If you make aparad. If you think you made aparad. यदि आपको लगता है आपसे अपराध हुआ है तो कोई भी एकादशी Paramatma- निर्जला कीजिए. Paramatma is pleased and finished. परमात्मा यदि आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपका वो अपराध गया. But the main thing is you don't do it twice. One time Krishna will forgive. एक बार कृष्ण माफ कर देंगे लेकिन दोबारा Second मत करो. time, nah. दोबारा मत करो. Mahaprabhu is always pleased with us. He's transcendental. He doesn't think about these things. That's Maya Devi's business. वो उनका प्रश्न है कि हम कैसे समझे महाप्रभु हमसे प्रसन्न है. तो महाराज बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु हमसे हमेशा प्रसन्न है. Look, finish.
चैतन्य महाप्रभु हमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो माया का काम है, हमको ऐसा लगता है। In the 9 islands of Navadvip Dham, Mahaprabhu does not accept offenses. Sleeping is considered dandavats. Walking is considered parikrama. Talking is considered kirtan in Sri Navadvip Dham. जो नवदीप मंडल है उसकी महिमा ऐसी है कि 9 दीप जो है उसमें यदि आप चल रहे हैं तो महाप्रभु आपको मानेंगे कि आप परिक्रमा कर रहे हो, आप सो रहे हो तो महाप्रभु उसको दंडवत के रूप में लेंगे, आप बोल रहे हो तो महाप्रभु उसको कीर्तन के रूप में लेंगे। But if you think you made an offense, then just chant. Chant extra rounds. Chant 8 more rounds और that यदि day. आपको If you think you made. यदि आपको लगता है आपसे अपराध हुआ है, But Mahaprabhu's not accepting. तो आप जो है माला करो एक्स्ट्रा, लेकिन महाप्रभु लेते नहीं है। But if you think you made a mistake, then chant extra. लेकिन यदि आपको लगता है ऐसा तो आप एक्स्ट्रा राउंड जप करो। How will you know if the Lord's pleased or not? You cannot understand these things. तो उनका प्रश्न है कि जो हमसे अपराध हुआ है उसके ऐसे कुछ लक्षण हो सकते हैं क्या, कि भक्तों का संबंध संग नहीं मिल रहा है, हमसे माला का नाम जप नहीं हो रहा है, ये कुछ ऐसे ऐसे लक्षण हो सकते हैं क्या अपराध के? His point is right. तो महाराज बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे Like हैं। sometimes you see devotees come to the temple and then all of a sudden you don't see them for a while. That's because they made aparadha. तो कई बार ऐसा होता है कि आप मंदिर में भक्तों को देख The रहे हैं, deities don't want to see that person. लेकिन अचानक से जो है भक्त मंदिर में आना बंद हो गया। So by the symptoms you can understand the cause. तो आप लक्षणों से आप समझ सकते हैं। But still, if you find yourself in that situation, just keep chanting. लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप सिर्फ जप Because जप करना chanting निरंतर रखिए। can cleanse and clean everything. जो जपा जो है उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। And then if it's Ekadashi coming, you can do full Ekadashi, Nirjala. और कोई एकादशी आती है उस दिन आप निर्जला रखो। But normally, devotees, Vaishnavas don't have to do tapasya. You know, bhakti is not tapasya. You know, bhakti is enjoying for Krishna, with Krishna. You know, tapasya, just be careful with sadhoninda though, because I know in temples there's always sadhoninda somewhere. Always. Just be careful with. Don't criticize anybody. If others criticize you, no problem. Let them criticize you, but don't you criticize anybody. तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपसे कोई वैष्णव निंदा नहीं हो रही हो। भक्त आपकी निंदा करते हैं कि नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, लेकिन आप जो है सावधान रहिए, आपसे कोई वैष्णव निंदा नहीं हो रही है। Okay. Yes. What did you say? The first चैतन्य महाप्रभु, हाउ मच टाइम चैतन्य महाप्रभु वाज देयर इन दिस वर्ल्ड? 48 years. 48 साल। The first 24 as a grihasta, the next 24 as sannyas. पहले जो 24 थे उसमें गृहस्थ थे, बाकी 24 सन्यास। 1 second, Ma. Yes. She has a question. Okay. तो माता जी के प्रश्न है कि जब मैं 16 माला जप करती हूँ मेरा मन तो इधर उधर भागता है, तो क्या करने का? Okay, you came late, but earlier I explained something about chanting. You have to pick the time of the day when you can chant with a free mind. तो So the earlier in the morning, the better. तो महाराज ने इसका उत्तर पहले ही अपने लेक्चर में दिया है कि आप जो है पूरे 24 घंटे में एक समय निश्चित कीजिए और उस समय जो है 2 घंटे उस समय आप अच्छे से जप कीजिए। Because although no one receives any karma from their job, jobs are karma free because you have to feed yourself, you have to have a place to stay like that. There's no karma there. जपा जो है उसका कोई रिएक्शन नहीं आती, जपा जो है अकर्म है। But it's still material and mundane. A work job is karma yoga. It's still material, whereas chanting is transcendental. जो जपा जो होता है वो दिव्य होता है। So you pick the time of day when you can chant free, and then you chant your rounds, whatever number you do at that time all at once, and then go to work happy. तो आप जो है पूरे 24 घंटे में समय निश्चित कीजिए 2 घंटे का, उस समय बैठ के एक जगह बैठ के सिंसियरली 2 घंटा जपा कीजिए, उसके बाद में अपना काम कीजिए। I mean, the mind is restless and uncontrolled for you, okay? For everybody at some time we had the same thing, but you just keep chanting anyway. And when you chant, you think of Krishna. You think of Krishna's Leela. Which Leela do you love the most? Damodara Leela. Yeah, then you think about that when you chant.
Don't think about your work or what you have to do tomorrow or what you didn't do yesterday. Forget about that. महाराज बोल रहे हैं जपा के समय पे आपकी जो पसंदीदा कृष्ण लीला है उसका चिंतन करो। जैसे माता जी बोल रही है मेरे को दामोदर लीला अच्छी लगती है, तो महाराज बोल रहे हैं कि आप उसका चिंतन है, संसार के बारे में मत सोचो, दामोदर लीला अच्छी लगती है वो सोचो। Or whatever your leela is, whatever your favorite leela is, you think of that. जो आपकी फेवरेट लीला है उसके बारे में चिंतन करो। Everyone has a favorite leela. Everyone. सबकी कोई ना कोई फेवरेट लीला तो होती है। Some have Krishna dancing on Kaliya's hood. Some have Govardhan. Some have Mahaprabhu chastising Chandkazi for breaking the mridanga. Everybody has a favorite leela. Some have Nishinga Dev as he rips open Hiranyakasipu. Some have Varaha Dev when he lifts the earth with his tusks. You know, किसी की कोई भी फेवरेट लीला हो सकती है, जैसे बराहदेव की लीला, नरसिंह भगवान की लीला, चैतन्य महाप्रभु ने चांद का जी का उद्धार किया था उसकी लीला, या फिर भगवान कृष्ण डांस कर रहे हैं गोवर्धन लीला, इसमें कोई सी भी लीला आपकी फेवरेट हो सकती है। There's a million leelas. लाखों लीलाएं हैं। And there's a leela for everybody in this room. सभी व्यक्तियों के लिए एक लीला है। And everybody in Mumbai. और सभी बॉम्बे के सभी व्यक्तियों के लिए। And everybody in India. और सभी भारतीयों के लिए। And everybody in the whole world. और संसार में सभी लोगों के लिए। Yeah. So there's never a shortage of leelas. लीलाओं का कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई कमी नहीं है। Okay. Any But Maharaj, we hear that while chanting you just listen, you don't think anything. That's for people whose minds aren't running here and there. Okay. For someone who's not running, yeah, that's what we do. But for those whose minds are running here and there, they have to focus on something. तो मैंने प्रश्न किया था महाराज, लेकिन हम सुनते हैं कि जपा को बस जपा करो और सुनो, हमको कुछ सोचना नहीं है। तो महाराज बोल रहे हैं ये उनके लिए है जो जिनका माइंड इधर उधर नहीं भागता, लेकिन जिनका भागता है वो लीलाओं के बारे में सोचो। When you get a little bit more advanced, then when you chant Krishna, Hare Krishna, it sounds so sweet in your ear by your own voice that you're enchanted. आप थोड़े एडवांस होते हो तो आपको कृष्ण का नाम इतना मधुर लगता है कि आप बोलते हो और उसको सुनते हो। We shouldn't chant like parrots. हमको तोते की तरह नहीं जप करना चाहिए। I know some grihastas, they have a parrot. They taught it to say Hare Krishna when you walk into the house. महाराज बोल रहे हैं मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ वो तोते की तरह जप करते हैं, जब आप उनके पास जाते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। But the parrot doesn't know what it means. लेकिन पैरट का वो वैसा मतलब नहीं होता है हरे So कृष्णा we बोलने shouldn't का। chant like that. You should listen to the sound of your voice, and the sound of your voice should be sweet in your ear when you chant Krishna's name. तो आपको इतनी मधुरता से कृष्ण का नाम जो है वो सुनना चाहिए, बोलना चाहिए आपके कानों में बहुत आत्मीयता के साथ। You can chant softly or you can chant loudly, but it should sound sweet to you because Krishna is sweet. आप धीरे जप कर सकते हैं, जोर से जप कर सकते हैं, लेकिन आपके कानों को ये मधुर लगना The चाहिए। name of Krishna means all attractive. कृष्ण जो है उसका मतलब होता है सर्व आकर्षक। तो ये He's the आपके कानों sweetest को of the मधुर लगना चाहिए। sweetest. वो मधुर से भी मधुर है। Okay, I don't want to keep the brahmacharis from their service. They won't leave as long as I'm sitting here. Am I holding you up? महाराज बोल रहे हैं कि Yes. आप Yeah, I'm holding the नो brahmacharis. ही व्हाट यू आर सेइंग। महाराज बोल रहे हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया तो आपको मतलब बेकार तो No? नहीं लगा। Okay. All right, then we continue. All right. Yes. What do you think? हाउ टू प्लीज गुरु। You don't have a guru yet. Do you have a guru? What do you say? शिक्षा गुरु ही है। Listen, Siksha gurus are like the sun. The sun's going to shine whether you like him or not. शिक्षा गुरु जो है सूर्य की Like तरह the है। sun. The sun will shine whether you like the sun or don't like the sun. जो सूर्य है वो तो चमकता ही है, आप सूर्य को पसंद करो नहीं पसंद करो। To please the Siksha guru is pleasing the Vaishnavas. But you have to get a guru. And शिक्षा that's गुरु the guru you surrender to. शिक्षा गुरु को पसंद करना जैसे वैष्णवों को पसंद कर रहा है, लेकिन आप जो है गुरु को दीक्षा गुरु आप सरेंडर करो, गुरु से दीक्षा लो। I mean, it's sannyas' duty to give siksha. The sannyas's duty is to give siksha. Sannyas dharma. हाँ, संन्यास धर्म है ये दीक्षा देना। So many temples I go to with so many people like this, I'm giving this siksha to. तो जो है महाराज जो है ये आप सबको ये शिक्षा दे रहे हैं। Siksha guru can be many, but diksha guru is one. शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु कोई एक होता है। So when you get mature enough that you want to surrender to one guru, then you hear from him, you discuss with him, you see if there's a relationship between Indasya Ras, and let it grow naturally.
तो आप जो है वो स्वभाव रूप से मतलब कोई जल्दबाजी नहीं करें, दीक्षा गुरु से सुने, उनसे संबंध बनाएं और उनको अपनी बात बताएं कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। Okay, this man. Talk loud so he can hear you. Ah, okay. He's तो talking about Trinada Pi Sunichina. तो उनका प्रश्न था कि महाराज चैतन्य महाप्रभु ने जो है नम्रता के ऊपर बहुत जोर दिया है, तो महाराज के प्रभु जो है महाराज के रियलाइजेशन पूछ रहे हैं नम्रता के ऊपर, तो महाराज बोल रहे हैं तृणादपि सुनीचेन है। The key is to be more humble than a blade of grass and more tolerant to a tree to everyone. तो आपको जो है पेड़ से भी ज्यादा सहनशील और घास से भी ज्यादा नम्र होना है। We sannyasis always think of ourselves dasa dasa nudasa, the servant of the servant of the servant. हमको हमेशा ऐसे सोचना है हम दास दास दासों के दास हैं। I don't think that I'm better than you. महाराज बोल रहे हैं मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं आपसे ज्यादा I अच्छा हूँ। think I'm here to serve you महाराज ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, by giving you harikata, हरी कथा के माध्यम से मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। by answering your questions. आपके प्रश्नों का उत्तर देके महाराज का चेतना है कि वो आपकी सेवा कर रहे When हैं। a patient comes to a doctor and he's feeling sick, the doctor doesn't question him, he just gives the medicine. तो कोई पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास में जाता है तो उसकी बीमारी बताता है तो डॉक्टर उससे प्रसन्न नहीं करता, उनको दवाई देता है। But to learn how to be more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree takes decades. लेकिन ये चीज आपको अपनाने के अंदर कि पेड़ से भी ज्यादा सहनशील और घास से भी ज्यादा नम्र, आपको दशकों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। Because first you have to realize that I am not the body. We are not our bodies. तो क्योंकि आपको सबसे पहले तो इसके लिए ये आपको महसूस करना पड़ेगा कि आप ये शरीर नहीं है, आत्मा है। Very difficult. ये बहुत कठिन है। We are our bodies. Most people think they are their bodies. ज्यादातर लोग यही सोचते हैं हम ये शरीर है। Prabhu feels I'm strong man. वो सोचते हैं मैं मजबूत आदमी हूँ, मजबूत आदमी। Maharaji's feel, oh, I'm a beautiful woman. लेडीज लोग सोचती है मैं बहुत सुंदर हूँ। This is natural. But Krishna consciousness is based on we are not the body. We are spirit souls inside of a body. तो कृष्ण भावना मत का जो बेस है वो यही है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। The soul is eternal. Nothing can ever happen to the soul. आत्मा जो है वो दिव्य है। When this body goes, the soul goes into a new body. और ये जो शरीर का हम त्याग कर देते हैं तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती The है। type of body you get next life is determined by your actions in this life. तो आपके जो इस जन्म के कर्म है वो आपके अगले शरीर का निर्धारण करेंगे। There is no karma for anything offered to the Lord. कोई भी कर्म जो है वो हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। Karma comes from two things. कर्म जो है वो दो चीज से आते हैं। What you do and what you eat. आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं। Bus. That's it. That's That's it. it. So we want to be karma free because we offer everything to the Lord. हम जो है कर्म फ्री होना चाहते हैं, कर्मों के बंधन से छूटना चाहते But हैं। to be more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree. I'll give you one example. Mahaprabhu used to go to Jagannath Puri through the Lion's Gate and up to the Garuda Stamba. तो महाराज एक उदाहरण बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है सिंह द्वार से जो है अंदर जाते थे गरुड़ स्तंभ तक। And if you've been to Puri, you know how excited everybody is to see Jagannath. तो आप यदि पूरी गए होंगे तो आपने देखा होगा सभी लोग कितना उत्तेजित रहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। Old, young, everybody. Jagannath, 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 Jagannath. सब लोग ऐसे जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। And they hold the crowds back and they let them in groups. तो वो जो है सिक्योरिटी क्या करते हैं, क्राउड को जो है होल्ड थोड़ा रोकता है और ग्रुप ग्रुप के अंदर भेजता है So अंदर। everybody's pushing, but not too much. But everybody's pushing. तो सब जने एक दूसरे को धक्का मारते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब धक्का मारते हैं। So Mahaprabhu was in the Jagannath temple behind the Garuda Stamba. The Garuda Stamba is 100 yards from the Jagannath Mandir, from Jagannath in the inner temple. तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से दर्शन करते थे, जो कि गरुड़ स्तंभ है वो 100 यार्ड जो है जगन्नाथ जी के जो विग्रह है उनसे 100 यार्ड दूरी पे है। And he was standing next to the Garuda Stamba with his arm around it like this. The Garuda Stamba is about this big with his arm around it like this. And one old lady in the crowd, she came up, climbed up on his shoulder with his feet so she can see Jagannath. तो चैतन्य वो गरुड़ स्तंभ इतना बड़ा है तो चैतन्य महाप्रभु उसके ऐसे खड़े होते थे तो एक बूढ़ी औरत भाग के आई और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई दर्शन जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। Swarup Damodar said to this woman, "What are you doing?" Mahaprabhu said, "No, no.
He said, I wish I had that enthusiasm to see Jagannath. तो स्वरूप दामोदर ने बोला, ए क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, उसको कुछ मत बोलो, मैं भी ऐसा ही उत्साह चाहता हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने So का. what we want to have is enthusiasm for the Lord. We want to have enthusiasm. Anybody can come to the temple, give dandavats, put some money in the box, say goodbye and go. We want to have enthusiasm. तो ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है, हुंडी में पैसा डाल के जा सकता है, लेकिन हमें उत्साह होना चाहिए, उत्साह चाहिए. First comes attraction for the Lord, then attachment, then affection. सबसे पहले जो है आकर्षण होता है, उसके बाद में उनसे लगाव होता है, उसके बाद में प्रेम होता है. So once we, no, not prema. अफेक्शन, Affect, yes. इसने, Not affect. Prema comes way down the road. not प्रेम, इसने. We want to get praying, but I don't know anybody who has praying. But if you know somebody, you take me to them now. No, but has to be living. Remember, the guru must be living. We don't follow Ritvik if the guru's not living. When Prabhupada was alive, he sent some of his disciples as Ritvik to go to places where he could not go. But once he leaves this world, Ritvik's finished. Understand? Clearly, you must understand. Ritvik. You don't know what it means. No. Can you please repeat what you said? Okay. You know, I'm not thinking. This is just coming. Okay. Where was I? You stopped me. So, no, it's okay. Okay, yes. Okay, I know. First, attachment. सबसे पहले जो है Attraction. attraction. First is attraction. आकर्षण. So attraction manifests as sadhu sangha. जो आकर्षण जो होता है वो किस रूप में प्रकट होता है? साधु संघ के रूप Then में. from this attraction, we get some attachment. और फिर इस आकर्षण से जो है हमारा थोड़ा लगाव होता है. And that manifests as bhajana kriya. और जो ये जो लगाव है ये भजन क्रिया के We रूप में start प्रकट होती है. practicing these things that we have learned. तो हम जो है हमने जो सीखा है हम उसको प्रैक्टिस करना शुरू करते We've हैं. established our relationship with the Lord in dasya ras. हम जो है दास्य रस में भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं. And then next, for some fortunate people, some blessed people, affection comes. तो इसमें जो भाग्यशाली लोग हैं उनको फिर इसने के स्तर पे आते हैं. In Jagannath Puri, there's 15 days when the temple is closed. जगन्नाथपुरी में 15 दिन भगवान के पट बंद रहते हैं. All the Jagannath Basis are sad. None of them will smile. They won't laugh. They won't joke at this time. तो जगन्नाथ जी के भक्त बहुत दुखी रहते हैं 15 दिन जो जगन्नाथ जी के दर्शन बंद रहते हैं. Some devotees travel all the way to, what's that place? अखंड Alakar. Because they can see Vishnu there. It's 20 miles away. तो जो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते तो जो 20 मील दूरी पे जो अलारनाथ हैं उनके दर्शन करने जाते हैं भक्त. Jagannath does that to increase their affection for him. तो जगन्नाथ जी जो 15 दिन पट बंद रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि लोग भक्तों का जो उनके प्रति स्नेह बढ़े. Like when Krishna left Vrindavan, जैसे कृष्ण भगवान ने जब all वृंदावन the छोड़ा था gopis were weeping and crying and wailing and rolling on the ground. तो जब जो गोपियां थी और कृष्ण के जो वृंदावन में भक्त थे सो रो रहे थे, जमीन पे लोटे लगा रहे थे. That's a very sad leela when Krishna left for Mathura जब कृष्ण ने मथुरा के लिए चले गए तब वो बहुत ज्यादा दुखी हुए थे because he never came back. क्योंकि वो दोबारा कभी नहीं आए. You know? So this affection we want to get, the affection we can get easily. You think about the affection you have for your mother, your father, your brothers, your sister, your husband, your children. That's just the beginning of the affection that you want to have for Krishna. तो जो अफेक्शन जो है वो प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है, लेकिन अफेक्शन आप जैसे समझ सकते हैं, आपका पिता के प्रति अफेक्शन है, बच्चों के प्रति अफेक्शन है, माँ के प्रति अफेक्शन है, तो वो जो है उस प्रकार से भगवान के प्रति अफेक्शन. Krishna is only won by bhakti, which is exclusive loving devotion. Exclusive loving devotion. That's how you catch Krishna. आप जो है कृष्ण को जो है सिर्फ जो प्रेमा में भक्ति है उसी से पकड़ सकते हैं. You must not prema. लविंग डिवोशनल सर्विस. Yeah. Love it. Well, no. Prema is when you have the love. Bhakti is on the way to get the love. Understand? You said loving devotional service. Devotional service. Yeah, but that's not, it's like devotion. Bhakti is like the engagement, but prema is the marriage. Understand? हाँ,
भक्ति जो है वो एक प्रकार से जो है आप प्रबंध है, और जो प्रेम जो है वो शादी एंगेजमेंट, मतलब जो शादी से पहले एंगेजमेंट होती है, भक्ति उस प्रकार से है, और प्रेम जो है वो है शादी हो गई आपकी, उस प्रकार से है। Krishna prema means love for Krishna. कृष्ण प्रेम का मतलब होता है कि कृष्ण के प्रति आपके अंदर प्रेम, Bhakti is the way to get love for Krishna. और जो भक्ति है वो रास्ता है वो प्रेम प्राप्त करने का। I do not know who has Krishna prema because whoever has it doesn't show it. महाराज बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता किसके अंदर कृष्ण प्रेम है, क्योंकि जिसके पास कृष्ण प्रेम होता है वो दिखाता नहीं है। Like if you have a kilo of gold in your rucksack, are you going to say I have a kilo of gold? No. यदि आपके बैग के अंदर सोना है तो आप किसी को बताएंगे नहीं ना, देखो मेरे पास सोना है। Whoever has Krishna prema is not revealing. तो किसी के पास कृष्ण प्रेम होता है वो प्रकट नहीं करता। They'll say, "Oh, I'm such a beggar. I have nothing. You have everything." वो ऐसे बोलेगा कि अरे मैं तो They will not भिखारी हूँ, show. मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास में है कृष्ण प्रेम। Okay, so we have to stop, I think, now. But I can answer one more question, and that's, yeah. किसी का कोई एक पर्सन है, महाराज आखिरी एक पर्सन ले सकते हैं। Give her the microphone. Yeah. हरे कृष्णा। Hare Krishna Ma. प्रभु जी, मेरे जो बच्चे लोग हैं वो लोग बचपन में आते थे मंदिर में, माला करते थे, अभी बड़े हो गए तो अभी आ नहीं पाते, माला नहीं करते, उसके लिए क्या करना है? मैं तो करती हूँ भक्ति। She is asking कि her children they used to come when they were young age, so now they are not coming. She is coming but they are not coming, so what she can do? Ask her, is her husband coming? आपके पति आ रहे हैं क्या? He left the body. Okay, okay. Yeah, yeah. How old are they? How old? How old are her children? आपके बच्चे कितने, क्या उम्र है? 23 girl and 25 boy. Yeah. Yeah, they're captured by Maya, Ma. They're captured by Maya. Not in a bad way, like everybody else. Like they're karmis. तो उनको जो है जैसे माया का प्रभाव सब जगह है, कर्म कर्म के चक्कर में, काम के चक्कर में उलझ गए वो। She has Jagannath deity at home and they fast also. Children fast also. They follow Ekadashi? Yeah. Then if they follow Ekadashi, that's okay, Ma. That's okay. Yeah, तो sure. एकादशी का तो रख रहे हैं ना, अच्छा है। And does the son take care of her? आपका बेटा आपकी देखभाल करता है? Yeah, that's okay, Ma. That's okay. They'll come later. They'll come later. वो धीरे धीरे आएंगे। Now they probably want to get their profession, get their job, and this and that. अभी वो काम काज में उलझे हैं, लेकिन अभी बाद में आएंगे। She is saying, please pray for their children. If they come here, I'll pray for them. I'll bless them. If you bring them here, I'll bless them. आप उनको लेके आओ यहाँ, महाराज उनको आशीर्वाद देंगे। Yeah, Ma. It's karma. You know, everyone has karma. You know what I mean? सबके अपने अपने कर्म हैं। Okay. Yeah. I mean, see, I'm fasting till noon because for Advaita Acharya. I don't know what the rest of the brahmachari is fasting till noon. महाराज जो है 12 बजे तक फास्ट है महाराज का, तो ब्रह्मचारी आप लोगों का भी फास्ट है 12 बजे तक? Yeah, okay. So we're all fasting, but you don't have to fast, but we're fasting. You know, we're fasting for you too, okay? महाराज जो है Yeah. उनका भी फास्ट है, तो आप भी फास्ट रख सकते I हैं। mean, believe me, some temples I talk to 10:30, 11, but I don't want to really mess up the program here at the temple. You devotees have to go now? महाराज जो You है have वो service? महाराज जो है 10:30 11 बजे तक क्लास देते हैं, लेकिन इसमें लिख रखा है ना 9 बजे तक, तो आप लोगों का जो शेड्यूल है वो बिगाड़ना नहीं चाहते। तो आपका कोई प्रोग्राम है क्या, आपको कहीं जाना है क्या? नहीं तो महाराज कंटिन्यू करेंगे। Okay, okay. All righty. It's okay. That's my dharma. Okay, so Advaita Acharya, he was like the grandfather figure for all the Vaishnavas at that time. तो अद्वैताचार्य जो थे उस समय एक पितामह के रूप में थे सभी वैष्णवों के। He was the most senior and he had the most knowledge. उनको सबसे ज्यादा ज्ञान था और सबसे ज्यादा वरिष्ठ थे। And he's Mahavishnu.
और वो महाविष्णु है। So he guided all the Vaishnavas to be prepared for when Mahaprabhu came. तो उन्होंने जो है सभी वैष्णवों को इकट्ठा किया महाप्रभु के आने के लिए, जो है उसके लिए। He knew the desire of the Lord. वो महाप्रभु की इच्छा जानते थे। He knew that the Lord was coming to do his Sankirtan Yagya. वो जानते थे कि महाप्रभु जो है संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने So के लिए what आए he हैं। did was he prepared the foundation so that when Mahaprabhu came, he could easily begin his Sankirtan mission. तो उन्होंने जो है नींव तो रख दी थी अद्वैत आचार्य ने, ताकि महाप्रभु जब आए तो वो आसानी से संकीर्तन यज्ञ जो है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। You have to understand, at that time, Muslims controlled Bengal. Bengal was a Muslim rule. ओके, उस समय जो है बंगाल के ऊपर मुस्लिम शासन था, So it was very difficult for devotees to congregate. तो बहुत कठिन था डिवोटियों के लिए इकट्ठा होके जो है कथा वथा कीर्तन करना। So Advaita Acharya set the foundation so when Mahaprabhu could come, he could begin his pastimes at the proper age. तो अद्वैताचार्य ने नींव तो रख दी थी ताकि महाप्रभु जब आएंगे तो फिर वो अपना संकीर्तन यज्ञ जो है वो शुरू कर सकते हैं। So when Mahaprabhu, in his early age, he was acting like a normal Brahmin. तो जो शुरुआती के समय पे चैतन्य महाप्रभु जो है एक साधारण ब्राह्मण के रूप में ही But when थे। he took his father's ashes to Gaya, he got initiation from Mishvara Puri. जब वो अपने पिता की जो राख थी, शरीर छोड़ने के बाद जो राख थी वो लेके गया के अंदर गए, And initiation started his Sankirtan Yatra. और जैसे ही उनकी दीक्षा हुई तो उन्होंने अपना संकीर्तन यज्ञ शुरू किया। Okay, so I will stop now because, I'll tell you, sometimes it goes on and on, but we'll stop now, okay? So all glories to Srila Prabhupada. All glories to the Parampara. All glories to Srimad Bhagavatam. All glories to Advaita Acharya. All glories to Tulsi Devi. All glories to Vrindavan Dham, Navadip Dham, Jagannath Chaitra. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled His devotees. Holiness Varaha Swami Maharaj की, शिला प्रभुपाद की। Tell them I really have respect for these devotees that stay to hear class. Bhagavatam class is so important. महाराज बोल रहे हैं कि भागवतम क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका महाराज को बहुत अच्छा लगा आप इतना भागवतम अटेंड कर रहे हैं। So I'm leaving tomorrow morning early at Mangala Arati. I won't see you again till I don't know when, but I'm happy to see you now, and I hope I see you in the future. महाराज जो है आपको देख के खुश हैं। सुबह जो है मंगला आरती के बाद महाराज जा रहे हैं मायापुर।